हम पणजी गोवा लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं दीप शिखा दुर्गापाल हिंदी में और जेफरी मैनुअल अंग्रेजी में। आइए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पणजी गोवा चलें। नमस्कार। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी आज इसका अंतिम दिन है और इसके समापन समारोह का आंखों देखा हाल रेडियो सेट के जरिए और हमारी आकाशवाणी की न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए अपने साथी जेफरी मैनुअल के साथ मैं दीपशिखा दुर्गापाल हाजिर हूं। मेरे साथ हैं प्रोडक्शन दल के मेरे सदस्य और अभियांत्रिकी के सभी सदस्य जो इस अभिगम में मेरे साथी बने हैं। गोवा में 20 नवंबर से आरंभ हुआ ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 53वां संस्करण है। आज 28 नवंबर को इसका पटाक्षेप होने जा रहा है। सन 1950 में ये फिल्मोत्सव आरंभ हुआ था मुंबई में, तब वो बम्बई कहलाती थी। तब से वो परवान चढ़ता रहा और इस साल इसकी थीम है सिनेमा के 100 साल। इफ्फी एक ऐसा मंच है जहां रील और रियल, कल्पना और हकीकत दोनों मिलते हैं। जिन सुनहले चमकते सितारों को रुपहले पर्दे पर हम देखकर रोमांचित होते हैं, वे सभी सितारे यहाँ जमीन पर उतर कर आते हैं और वे उतर कर आने भी लगे हैं रेड कार्पेट पर। अब से बस कुछ ही देर में ये सारे के सारे तारे यहाँ श्यामा प्रसाद ऑडिटोरियम में अंदर आएंगे, अपनी पूरी छटा बिखेरेंगे जो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। वैसे कोविड के कारण बीच का कुछ समय, कुछ साल प्रभावित हुए थे, जैसा कि विश्व के हर कोने में कोरोना ने अपना असर दिखाया था और इफ्फी भी हाइब्रिड मोड पर चला गया था। लेकिन अब इसका 53वां संस्करण लौटा है पूरे जोशो खरोश के साथ, जिसे हम यहाँ अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। ओवर टू यू जेफरी। Thank you, the wonderful Dipshika. If this was TV, you would actually see her in a beautiful sari out here. Well, listeners, good afternoon, or should I say good evening, as the sun possibly sets it. It's clear blue skies right here in Goa, and what a sight it is already. I think it's a good 1,500 people already coming in. People decked up in their suits and their finery, and we're still awaiting, of course, our dignitaries to set in, and that's when all the fanfare will start. Well, dear listeners, if you're just tuning in, you are now tuned into the closing ceremony. It's not yet begun, but we're waiting for all flashy people, that's what we like to call them. Plenty has happened in Goa, and now currently the home of the 53rd International Indian Film Festival, and it's so good to be here. We've got delegates coming in from, well, various parts of the world, bringing in color, bringing in pomp and gaiety. Tonight we're going to be witnessing a lot of fanfare, celebrities, and lots of good performances. And as I can safely say, while we have special category winners as well that will be declared, we would be mentioning to you of the big dignitaries that are going to be gracing today's occasion. The 53rd International Film Festival, again I say, no stone has been left unturned by the government of Goa to bring to you, to bring to its delegates real comfort and great viewing, viewing comfort. The whole city of Panji, the capital of Goa, has been decked up with all its finery. It really seems like it's a festival. Now Goa is always decked up during, special times like the carnival or the festivals of Ganesh Chaturthi or during Christmas and Diwali. But I say a bigger festival is the film festival, where the roads are all lit up. It looks like a party scene out here, going in with the Goan vibe. Dipshika, I think it's going to be a very exciting closing ceremony, isn't it? Yes, definitely. And since you talked about Goa, आपने गोवा की बात की, तो यहाँ मैं माननीय प्रधानमंत्री का संदेश जो उन्होंने इफ्फी के उद्घाटन के समय दिया था, वो कहना चाहूंगी कि उनको माननीय प्रधानमंत्री का संदेश कुछ इस प्रकार था कि फिल्मों में सीमाओं को पार कर दर्शकों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करने की क्षमता होती है। उनकी सामाजिक परिवर्तन लाने की शक्ति अतुलनीय है और गोवा अपनी प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य और धधकती संस्कृति के कारण इफ्फी की मेजबानी करने की सटीक पृष्ठभूमि प्रदान करता है।
विभिन्न देशों और समाजों के बीच सिनेमा के कारण पैदा हुआ तालमेल कला जगत को गहरी समझ और नई सोच देगा। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने जेफरी कि गोवा एक बहुत ही धधकता हुआ सा अपना जो संस्कृति का एक उदाहरण पेश कर रहा है, वो यहाँ पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है। मंच पूरा का पूरा नीली लाइटों में सजा हुआ है, नीली सुनहरी चमकती हुई लाइटें हैं जो कि एक बहुत ही ग्लैमरपूर्ण वातावरण पैदा कर रही हैं। और जहाँ तक नीले रंग की बात है तो यहाँ मुझे जेफरी कुछ इस प्रकार का लगता है कि नीला रंग पणजी से कुछ विशेष नाता रखता है, क्योंकि ऊपर आसमान एकदम नीला, नीली छतरी का अनंत विस्तार है, साफ आसमान होता है अधिकांश रूप से, नीचे अथाह अनंत नीला समंदर होता है और बीच में गोवा की धरती पर नीले रंग की पुती हुई इमारतें होती हैं। जैसे देखिए पणजी और मीरामार बीच के बीच को जोड़ती हुई जो सड़क है, वहाँ पर सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय वो नीला है, पणजी नगर पालिका की इमारत नीली है, पुलिस कार्यालय जो है मुख्यालय वो भी नीला है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नीला जो है, मुझे लगता है कि उस रंग का गोवा के साथ कुछ तो नाता है। You bet, you bet. You kind of described it well. Radio, they say, is the theater of the mind, and Dipshika, you've just kind of drawn that wonderful picture. Clear blue skies and beautiful beaches out here in Goa, which in a nutshell describes this beautiful city. Yes, very well known for its coconut trees, great cuisine, wonderful music, wonderful people. You know, these 9 days, we set ourselves apart by bringing wonderful cinema to the people who come by, and of course, with the powers of technology, we reach out globally. Now, for those of you just tuning in, founded in 1952, the International Film Festival of India has now emerged as one of the most prominent film festivals in Asia. Now, the philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family, at its core, the International Film Festival of India has been erasing boundaries within the world of art and cinema. Now, this annual festival offers a platform to all the cinephiles and creators across the globe to showcase their work and talent, engage with film cultures of various nations, and promote understanding of the social and cultural ethos of world cinema. So it literally brings in different players. You know, it gives out opportunity for producers, directors to come under one roof and discuss. And there's been such a wide availability of different categories in our film festival. Dipshika, it's wonderful when you bring such talented people all under one roof, isn't it? Yes, absolutely. And since you talked about the history, तो यहाँ में आपने बात की 1952 में ये फिल्मोत्सव आरंभ हुआ था, मुंबई में आरंभ हुआ था, तब उसे बम्बई कहा जाता था। उसके बाद उसी वर्ष इसे दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और त्रिवेंद्रम भी ले जाया गया। लगभग पहले संस्करण में इसके लगभग 40 फीचर फिल्में और करीबन 100 लघु फिल्मों को प्रदर्शित किया गया था, लेकिन तब भी इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप स्थापित हो गया था जेफरी। बल्कि यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि ये एशिया का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव था जिसमें अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सहित 23 देशों ने भाग लिया था, जैसे कि जापान, इटली, रूस, ब्रिटेन। फिर उसके बाद इसके संस्करण आते गए। तीसरा संस्करण इफ्फी का तो स्वयं सत्यजीत रे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, और उसी वर्ष यानी जब इसका तीसरा संस्करण था तो पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रोड्यूसर्स संघ, जिसे फेडरेशन इंटरनेशनल दे प्रोड्यूक्टर फिल्म, ने ए श्रेणी का मानक दिया था, जिससे कि ये कान, बर्लिन, कार्लोविवारी, वेनिस फिल्म फेस्टिवल्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हो गया था। जी जेफरी, You've got your history all intact, I tell you. Well, just let's draw back to the scene right here at Dr. Shram Prasad Mukherjee. As we say, we are relaying to you what we see in front of us. It's a beautiful wide stage, all decked up with LED screens, and the sound really resonates out here. Great, wonderful audio that's coming out. As I can see, people in suits, all clad well. A few empty seats in this. What should I? It's a 3,000 capacity. I will correct me if I'm wrong here, but yeah, it's approximately, approximately, yes, and but definitely more. As we say, there. Can you see any vacant seats already? Well, they are slowly filling up, isn't it? Yeah. और जेफरी आप देखें तो जो मंच है, जो स्टेज है, उसे
एक मोर के पंख के जैसी आकृतियों से भरा हुआ सा लग रहा है, चमकती हुई लाइटें हैं। तो मोर की जो आकृति है वो गोल्डन पीकॉक इफ्फी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर के एक बहुत ही चकाचौंध भरा वातावरण तो पैदा कर ही रही हैं। साथ ही साथ मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते एक हमारी राष्ट्रीयता की भावना को भी जागृत कर रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये आज़ादी का 75वां वर्ष है, तो उसमें इफ्फी का ये जो आयोजन है इसमें भी बहुत ज़्यादा आज़ादी का महोत्सव जो है उसको एक बढ़ावा देने का, उसमें उस कड़ी में एक शामिल हो, उस श्रृंखला में शामिल एक कड़ी बनने का प्रयास किया गया है। So very true. Just to give you a quick roundup as to what you can expect in today's broadcast, or either if you're not here, we'll let you know that at today's closing ceremony this Monday, we should have the eminent actor Akshay Kumar, who should grace us with his presence. Now, Telugu megastar Chiranjeevi will be present at the event to receive the Indian Film Personality of the Year award. Absolutely. The winners of the Golden Peacock, as Dipshika just said, the peacock is such an integral part of this festival. The winners of the Golden Peacock for the best film and Silver Peacock for the best director, best male and female actors will be announced, along with the winners of the ICFT Gandhi Medal. I got that International one. Council for Film and Television. True. That's the UNESCO Gandhi Medal that you are talking True, about. true. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो सितारों के आपने नाम लिए उसी में मैं कुछ नाम और जोड़ना चाहूंगी। जैसे आशा पारेख अपने जमाने की एक बहुत What a बड़ी stalwart, स्टार थी, yes. नृत्यांगना हैं। फिर शेखर कपूर फिल्म निर्देशक, जिनकी बनाई हुई फिल्में लोग आज भी याद करते हैं। अक्षय कुमार के बारे में तो आपने कहा। आयुष्मान खुराना जो नई जनरेशन के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ते हैं। फिर तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार राणा डगुबाटी, मानुषी चिल्लर जो कि मिस वर्ल्ड 2017 में रही हैं, और ईशा गुप्ता जो कि मिस इंडिया इंटरनेशनल 2007 में रही हैं। वे सब यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और इस इफ्फी के 53वें संस्करण के समापन समारोह में। Once again, if you're just tuning in, good evening, listeners. And yes, you are in the humble presence of myself, Jeffrey, and we've got the lovely Dipshika taking you through today's I'm closing. so obliged, Jeffrey, for all the lovely words that I you're am showering going on to me. repeat that name because Dipshika is such a lovely. It's got so much of meaning as well. Before we could start, I actually asked her, tell me a little bit about the name, and beautiful Dipshika. So coming back over here, we slowly Thank but you. surely getting ready for what's going to be a fun evening at the 53rd closing ceremony. It was, in fact, even more spectacular for the opening. I tell you, they've really done a great job in bringing, what should I say, the essence of Goa 1, the essence of India 2, and of course the essence of Film Festival. We are celebrating, yes, the 75th Amrit Mahotsav, Yes. and keeping in mind the Indian culture, the Indian tradition. All of that is being reflected today right here at the 53rd, the closing ceremony of the 53rd International Film Festival of जी India, जेफरी, Goa. जैसा कि आपने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से 100 साल पूरे होने की अवधि अमृत काल जो है, इसके दौरान इफ्फी वैश्विक फिल्म जगत के लिए एक वृहद मंच बने, आदर्श गंतव्य स्थल बने, ये भारत का प्रयास है। और जिसमें साझेदार हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विशेष रूप से NFDC नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और गोवा सरकार। गौरतलब है कि गोवा में इफ्फी के आयोजन का ये 19वां वर्ष है। चलिए थोड़ा कुछ माजी में जाया जाए, इतिहास में जाया जाए। तो आज से दशकों पहले आरंभ हुआ कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसमें देश विदेश की चोटी की फिल्मों को लाने का, सिनेमा प्रेमियों के सामने परोसने का जो बीड़ा उठाया गया वो निरंतर चला आ रहा है और परवान चढ़ता जा रहा है। फिल्म कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस फिल्म महोत्सव इफ्फी में चुनी गई फिल्मों को भारतीय पैनोरामा में और विदेशों में होने वाली फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया जाता है, ताकि द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान किए जा सके विभिन्न देशों के साथ। और ये एक गैर लाभकारी प्रदर्शन के माध्यम से कल्चरल एक्सचेंज होता है दुनिया के विभिन्न देशों के साथ, और जिसका प्रत्यक्ष लाभ मिलता है सिनेमा प्रेमियों को,
उत्कृष्ट कहानियां, मनमोहक छायांकन, दिल को छू लेने वाला संगीत, मार्मिक स्वाभाविक दमदार अभिनय, रोमांचित कर देने वाली तकनीकें, जिस्मानी अनुभव से परे भाव और भावनाएं, हर समाज के अपने अनोखे ताने बाने और भी बहुत कुछ परोसती हैं फिल्में दर्शकों के आगे। क्यों जेफरी, क्या मैंने सही कहा? True. As I say, the film festival is a melting pot, right? It brings people from across the world, people who have in-depth knowledge of the industry, talented producers and director. In fact, I had the honor of meeting Mark Seong. He came all the way from Singapore. He's not a big producer or director. He's just a great movie buff, and he says, this is my first visit to Goa and India, and what a fine job. Would you believe he watched 4 movies in a day, moving in from different places? Mark Seong, I'm not too sure whether he's tuned into this, but it just gives you an example of how international this festival is. We've got delegates traveling from different parts, and yes, it's a great relief because you and I, listeners, know what COVID came in and kind of brought in all of its hurdles and brickbats, but you can safely say 7,000 plus delegates who've registered and set themselves a show right here for this 53rd film festival, which gives us such an uplifting feeling. Especially being resident of Goa, we know the difference of having tourists in our little beautiful state of Goa. And as you rightly said, Dipshika, it is a melting pot. It brings people from across the globe to share their vision, to share their ideas, and all kudos to all our dignitaries whom the Goan government who made it possible. Who made it, yes, the information and broadcasting team, all that. In fact, we should make a mention of some of them who would be attending, like the Goa governor, His Excellency P.S. Sridharan Pillai, who will be here, Union Minister for Information and Broadcasting, the Honorable Mr. Anurag Singh Thakur is going to be here, Minister for State for INB, L. Murugan, and of course the Honorable Goa Chief Minister Pramod Sawant will also make his presence जी felt हाँ, here. बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सभी बड़े बड़े नाम जो हैं, ये सब यहाँ पर अभी अब से थोड़ी ही देर में उपस्थित होंगे। आपने एक फिल्म प्रेमी मार्क सियोंग की बात की, तो ऐसे ही एक फिल्म प्रेमी हैं ब्रजभूषण चतुर्वेदी। वो न जाने कितने वर्षों से, मुझे लगता है कि शायद जब से इफ्फी का सूत्रपात हुआ 1952 में, तब से वो हर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो सिनेमा के प्रति जो एक प्रेम है, वो हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि वो एक दीवानापन है। हाँ, दीवानापन है, लेकिन किसी अच्छी चीज के लिए है, क्योंकि फिल्में सिर्फ ग्लैमर चकाचौंध ऐसी हो वो नहीं है। फिल्मों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिल्मों के जरिए आप किसी देश की अर्थव्यवस्था को भी समर्थन प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ आप मनोरंजन का तो साधन फिल्में देती ही हैं। ये कला का एक सशक्त माध्यम है। मतलब यूं कह सकते हैं कि ये एक रचनात्मक अर्थतंत्र है किसी राज्य का, किसी समाज का, किसी देश का। और इसके अतिरिक्त फिल्में इतिहास के पन्नों को भी खोलकर सामने रखने की क्षमता रखती हैं। और वो कहते हैं ना कि सशक्त चरित्र चित्रण के द्वारा समाज के वंचित वर्ग में विश्वास का संचार करती हैं। तो फिल्मों की ये बहुत बड़ी भूमिका है, जिसका सम्मान इफ्फी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हो रहा है। और देखिए, ये जैसा कि मैंने कहा, दुनिया के अलग अलग देशों के साथ संवाद स्थापित करने का अवसर है। और जेफरी, आप तो जानते ही होंगे कि इस 53वें संस्करण में बहुत सारे विभिन्न देशों से यहाँ पर फिल्मकार आए हैं। उसके अलावा जो OTT पर धारावाहिक चल रहे हैं अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग देशों के, वो उनका पूरा दल, निर्माण दल, उनके पात्र जो अभिनेता हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि एक इजरायली सीरीज है फौदा, वो भारत में बहुत लोकप्रिय रहे है, तो उसका का पूरा निर्माण दल, लियो राज जो हैं वो यहाँ पर हैं, और बहुत सारे जने वहाँ से हैं। फिर एक फ्रांसीसी सीरीज है कॉल माय एजेंट, तो उसका पूरा क्रू, कास्ट एंड क्रू, वो सब यहाँ पे हैं।
स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स, कुंग फू पांडा जैसी फिल्मों के निर्माता निर्देशक मार्क ऑसबोर्न। तो मतलब you can say all the movers and shakers of the film world, filmmaking, who are involved with filmmaking are over here. They have congregated over here and they have been over here exchanging ideas. वो आपस में एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान हुआ है और साथ ही साथ दर्शकों को भी उससे लाभान्वित होने का भरपूर अवसर मिला है। Very true. You can actually hear the excitement in Dipshika's voice, but I don't say you're exaggerating, because what I see is what we're telling everybody. It is a mixed color of vibrant, a kaleidoscope of various colors that have gathered here. If I look to the stage, it's rather empty now, which means, and I can actually see some of them organizers and producers of the show moving helter skelter, which kind of announces that something's going to start already. We're looking forward to we've got quite a few artists, isn't it, Dipshika, who will be performing Yes, quite today. a few we have Could you, lined for our up. listeners' perspective, just kind of give them a जी brief हाँ insight? बिल्कुल। सुखविंदर सिंह यहाँ पर होंगे, जिनकी आवाज की तो मैं बहुत दीवानी हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं अपवाद हूँ, सभी उनकी आवाज को बहुत पसंद करते हैं। Dipshika Papon and with his band is going to be performing as well. जी हाँ। फिर उसके अलावा नाच, जो कि बॉलीवुड और बॉलीवुड शब्द ही नहीं बल्कि भारत के सब विभिन्न जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनमें नाच गाना तो एक अभिन्न अंग होता है हमारी। As I was walking in, I could see Goan cultural dancers, and what is a show in Goa without us showcasing some of beautiful Goa? So yes, plenty planned. If you are headed here into the Shyam Prasad Mukherjee, I'd say you're getting a little late. Hope you get somewhere to sit as you get here, because this is absolutely jam-packed now. What was that saying that you started off? तिल के लिए भी जगह नहीं। हाँ, तिल धरने की भी जगह नहीं है। As you said, there's no place to find a footing, not even forget a foothold. There's no place to find a toehold also now. Yes. क्योंकि ये जैसे जैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पर जगह बिल्कुल नहीं बचेगी, और बल्कि हमें तो शायद लोगों को कहना पड़ेगा कि आप सामने से हटिए, क्योंकि फिर हमें भी आंखों देखा हाल पहुंचाने में बाधा आएगी। लेकिन हम वापस लौटते हैं इफ़ी की ओर। देखिए, इस बार नहीं, वैसे ये पिछले संस्करण में शुरू किया गया था, 75 क्रिएटिव माइंड्स फॉर टुमारो। तो ये जो संख्या 75 है, ये न केवल अपने आप में पूर्ण संख्या है बल्कि इसकी लाक्षणिक महत्ता भी है। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जेफरी ने भी कहा कि ये आज़ादी का 75वां वर्ष है और उसके साथ इसका महत्व है। तो फिल्म जगत से जुड़ी 75 हस्तियों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इफ्फी के मंच पर विशिष्ट संज्ञान देना, ये भी आज़ादी के 75 वर्षों के साथ कला क्षेत्र को जोड़ने वाली कड़ी है। भारत को एक वैश्विक कंटेंट निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, ये भी इफ्फी का एक प्रबल अभिगम है। और इसके अलावा ये जो फिल्मों महोत्सव है, इसमें प्रादेशिक भाषाओं में बनी फिल्मों को भरपूर बढ़ावा देना, वो भी इसका एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है, वो इफ्फी में पूरी तरह से परिपूर्ण होती दिखाई दी है। हाँ, जेफरी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? So yeah, just going to take away from what you told us. This year yet again, 75 young aspiring filmmakers and film artists have been handpicked from across the country to take part in the 75 Creative Minds of Tomorrow initiative. The event is the brainchild of Union Minister of Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur. Now, the youngest winners this year are two 18-year-old music composers from Haryana and Maharashtra, while the maximum number of winners are from Maharashtra. Winners from Tamil Nadu, Delhi, Uttar Pradesh and West Bengal follow. The winners all, can you imagine that? 18 years, starting at 18. What a fine age to start off with their talent, and the opportunity has been given to them. This is the second edition, 75 Creative Minds of Tomorrow, all between the age of 18 and 35, are handpicked from 19 different states. And yes, these are selected in different
categories. There's direction, script writing, playback singing, music composition, acting, costume and makeup, editing, animation. Outside Dipshika ji, the red carpet is already interviewing the Honorable Minister Anurag Singh Thakur. So he's here in our midst. माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर का पदार्पण हो चुका है। रेड कार्पेट पर है, लाल गलीचे पर वे हैं और अभी वे बातचीत कर रहे हैं। और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक बहुत बड़ा अभियान है इफ़ी। तो आपने जो 75 क्रिएटिव माइंड्स की बात की, तो उसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि उसी का एक अंग था कि 53 आवर चैलेंज दिया गया था। जिन लोगों ने इसमें आवेदन किया, आवेदन बहुत बड़ी संख्या में आए, उसमें से 75 जनों को चुना गया और उन्हें ये एक प्रकार की प्रतियोगिता रखी गई कि 53 घंटों के भीतर उन्हें एक शॉर्ट फिल्म बना करके देनी है। तो 53 घंटों के भीतर आप कुछ रचनात्मक कार्य कर सकें, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उन्होंने कर दिखाया भी। जैसा कि आपने बताया कि डायरेक्शन में रहे चैतन्य गोविंद काबे, फिर उसके अलावा जायगाम हमीद भट्ट, वृषभ मैत्री, जितिन मोहन और इसी प्रकार से अलग अलग श्रेणियां जो जेफरी ने अभी बताई। स्क्रिप्ट राइटिंग तो उसमें ट्विंकल साज, सचिन ऑगस्टीन, भास्कर विश्वनाथन, ये सब विनर्स हैं। और ये जो एक मंच मिला है इन्हें यहाँ पर आकर के अपनी प्रतिभा को निखारने का, अपने अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको दुनिया के सामने उजागर करने का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए रेड कार्पेट पर अभी अक्षय कुमार भी आ गए हैं और फौदा सीरियल की जो कास्ट है, जो मैंने जैसा बताया था कि लियो राज जिसमें जो उन्होंने मुख्य किरदार अदा किया था डोरॉन का, वो अभी आ गए हैं। और उनके साथ साथ इजरायली पत्रकार आवी इचरोव भी आ गए हैं। आवी इचरोव पत्रकार हैं, लेकिन साथ ही साथ वे अरब जो क्षेत्र है और पश्चिम एशिया की राजनीति उसमें बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं, उसके बारे में बहुत ज्ञान रखते हैं। तो वे भी इस इफ़ी में शिरकत कर रहे हैं। और खिलाड़ी कुमार के नाम से प्रसिद्ध अक्षय कुमार जी का भी पदार्पण हो चुका है। जेफरी देखिए वो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। What a personality! Everywhere you get him, he kind of has that magnet that. This is Sri Chiranjeevi sir. He's also here with us. जी हाँ, और चिरंजीवी तो न सिर्फ तेलुगु फिल्मों में उन्होंने काम किया है, उन्होंने हिंदी में, कन्नड़ा में, तमिल फिल्मों में भी काम किया है। 150 से ज्यादा फिल्में वे कर चुके हैं। और अभी अक्षय कुमार और लियो राज जो कि फौदा सीरीज, इजरायली सीरीज जो है उसके जो निर्माता हैं, उनके साथ इनकी बातचीत चल रही है। चिरंजीवी भी वहीं पर हैं। तो ये आपस में एक संवाद सा चल रहा है और ये धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ेंगे जो हम आपको बताते रहेंगे। So just to present the scene to you now, all these celebrities are right now at the red carpet, going flash with paparazzis and photographers as they set themselves in. Yes, they finished their interview at the red carpet and slowly making in. I think the whole audience here will rise up and resonate in cheer as he makes his entry. We should be listening out because there is plenty of awards to be taken as well. There's a Best Film Award. The award carries a cash prize of 40 lakhs to be shared equally between the director and the producer. The director is to be given the Golden Peacock Award and a certificate in addition to the cash component. The producer is to be given a certificate in addition to that cash component. So yes, you'd have Best Film, Best Director, Best Actor, Male, Female. बेस्ट डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है उसमें सिल्वर पीकॉक, एक प्रमाण पत्र और साथ ही साथ नगद राशि 15 लाख रुपए की। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का है, उसमें भी सिल्वर पीकॉक होता है, प्रमाण पत्र है, 10 लाख की नकद राशि है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है, सिल्वर पीकॉक, प्रमाण पत्र और नकद राशि। तो और फिर उसके अतिरिक्त स्पेशल जूरी अवार्ड है जिसमें सिल्वर पीकॉक है, प्रमाण पत्र है और 15 लाख की नकद राशि का पुरस्कार जाता है, जो
किसी एक विशेष फिल्म को जाता है जिसका चयन जूरी करती है, या फिर किसी व्यक्ति विशेष को जाता है जिसने अपना कुछ विशिष्ट योगदान दिया हो किसी फिल्म के लिए। All this and much more will be declared in the next 1.5 hour or 2 hours. So people are going to be at the edge. We've got quite a few contestants vying for these positions. So yes, the best film, 40 lakhs, best director. Mind you, there is the cash prize, but that Silver Peacock is a great, what should I say, credit or rather a feather to your cap. Now we'd also have to make a mention that there's a Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. Now to commemorate 100 years of India's most celebrated filmmaker, the late Satyajit Ray. If his Lifetime Achievement Award has been rechristened as the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. Now the prestigious award consisting of a cash prize of 10 lakh, a certificate, a shawl, medal and a silver peacock and a scroll conferred upon a master filmmaker for his or her outstanding contribution to cinema. जी हाँ, जो कि स्पेनिश फिल्म निर्माता कार्लोस सोरा को विशिष्ट रूप से एक सम्मानित किया गया था जब इस इफ़ी के 53वें संस्करण का उद्घाटन हुआ था। अब चूंकि कार्लोस सोरा स्वयं काफ़ी उम्र के हैं तो उनकी बेटी ने उनकी ओर से इस पुरस्कार को स्वीकार किया था। और इसके अलावा इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ऑफ इफ़ी उसका पुरस्कार भी है, तो जो 10 लाख रुपए का है, जिसमें प्रमाण पत्र, दुशाला है और सिल्वर पीकॉक जो दिया जाता है, जो किसी भारतीय फिल्म अभिनेता या फिल्मों से जुड़ी शख्सियत को जाता है भारतीय सिनेमा को अभूतपूर्व योगदान देने के लिए। और इसके अलावा एक होता है निर्देशकों के लिए पुरस्कार, बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म यानी पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाने का, तो जिसमें भी सिल्वर पीकॉक होता है, प्रमाण पत्र और नकद राशि 10 लाख रुपए की। तो So once again, thank you, Deepshika. Yes, we are in beautiful sunny Goa, coming to you live. Goa to the world, I say. We are at the Dr. Shyam Prasad Mukherjee Stadium. It's filling up and filling up well. If you just tune in, listeners, you haven't missed much. In fact, it's a good introduction being made by my co-host Deepshika and myself, Jeffrey. We're taking you through the wonderful nuances of the 53rd closing of the 53rd International Film Festival of India, which is home right here in Goa. It is full, I say. It's just a matter, we could see people coming up to the stage. The music has gone down and I see excitement and I think dignitaries taking their seat. Deepshika, you think we are ready to go? Well, I think so, yes. हम बिल्कुल आपको अभी मंच की ओर लिए चलते हैं, जहाँ पर अभी हालांकि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन थोड़े संगीत का तो आनंद लिया जा ही सकता है। चलिए यहाँ पर बात वापस से मोड़ते हैं इफ़ी के ऊपर। और देखिए, इफ़ी जो है ये वैश्विक फिल्म निर्माण उद्योग और हमारी रचनात्मक अर्थव्यवस्था के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है, ये बात तो आप मानेंगे। और ये दुनिया की फिल्मों की खरीद फरोख्त का भी बड़ा केंद्र है, जैसा कि आपने देखा कि देश विदेश से बहुत सारे फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग आए हैं और इसमें दक्षिण एशियाई सिने सामग्री और फिल्म निर्माण और वितरण की प्रतिभा को खोजने, बल देने और प्रदर्शन करने का बहुआयामी काम संपन्न होता है। अब इसमें देखिए, बॉलीवुड ये नाम हालांकि कईयों को नागवार गुजरता है, लेकिन भारत की फिल्मी दुनिया की पहचान विश्व में ज़्यादातर इसी नाम से होती है, बॉलीवुड से। तो भारतीय फिल्म जगत की बॉक्स ऑफिस का कमाई का लगभग 44% हिंदी फिल्म उद्योग से बनता है। लेकिन साल 2021 में तेलुगु फिल्म उद्योग ने इसमें बाजी मारी और तमिल, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, उड़िया, असमिया भाषाओं की फिल्मों का भी बहुत बड़ा योगदान है भारतीय फिल्म उद्योग में। और देखिए, जो मोशन पिक्चर है उसकी शुरुआत हुई थी लूमियर बंधुओं द्वारा 1896 में, वो मोशन कैमरा बना करके। और उसी वर्ष वे लोग मुंबई आए, तब उसे बम्बई कहा जाता था। और उसके साथ ही भारत में भी फिल्म निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका सूत्रपात हुआ। तो इस बार का ये जो इफ़ी का संस्करण है, 53वां संस्करण, इसमें कंट्री ऑफ फोकस फ्रांस रहा
और फ्रांस के नामी गिरामी फिल्मकारों की कृतियां प्रस्तुत की गई। फ्रांसीसी फिल्म जगत के बहुत से भारी नाम इस फिल्मोत्सव में शिरकत करे हैं जो आज भी यहाँ उपस्थित हैं, जैसे कि एक फ्रेंच निर्देशिका हैं पास्कल शॉन्स, वो भी आई हुई हैं। तो फिर उसके अलावा न्यू वेव सिनेमा जिसे कहते हैं, नई लहर की जो फिल्में हैं उसके प्रणेता जॉन लुक गोदार, उस पर तो पूरा का पूरा एक खंड समर्पित था इफ्फी में इस बार। और इसके अलावा एक जो नई चीज यहाँ पर इस बार की गई इफ्फी में वो थी पवेलियन स्थापित करना। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्मोत्सव होते हैं उनकी तर्ज पर पवेलियन स्थापित किए गए, जैसे कि मार्शे ड्यू कान है वहां पर भी पवेलियन होता है। तो इस बार इफ्फी में भी पवेलियन स्थापित किए गए। कुल 42 पवेलियन थे इस फिल्म महोत्सव के, जिसमें प्रतिभागी देशों ने भी अपना पवेलियन स्थापित किया। इफ्फी में भाग लेने वाली जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपना पवेलियन बनाया, फिल्म निर्माताओं का था और निर्माण गृहों का रहा। और इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि कार्यालय के रूप में भी यहाँ पर ये पवेलियन काम कर रहे थे। और फिर भारतीय पैनोरामा तो खंड था ही। जेफरी, आप कुछ कहना चाहेंगे? So very true. So, India was only thought about Bollywood, right? Everybody would talk about Bollywood movies, but now that's not the case, because every part of India is coming up with some brilliant movies. Call it Tollywood, or you go down to the south, you go down Telugu movies, as Dipshika said, there is the good Bengali movies that are coming in. So it's not just Bollywood. She spoke about the various aspects of the film festival while watching movies that you would not generally come into the country of India. Thanks to the International Film Festival, it all comes down here. Yes, we can just now hear announcements about telling people to settle down, which means जी हाँ, मतलब कि जल्दी ही मंच पर अब पूरी तरह से ये सब आने वाले हैं। जो चमकते हुए सितारे हैं, जो विशिष्ट अतिथि हैं, वो अपना अपना स्थान ग्रहण करने लग गए हैं। आपने जेफरी बात की कि भारत का जो फिल्म उद्योग है वो सिर्फ हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं है, वो बिल्कुल सही बात है। और भारतीय पैनोरामा के लिए जो क्वालिफाई करने वाली फिल्में थी 354 फिल्में थी, तो वो भारत की विभिन्न भाषाओं में बनी फिल्में रही। इस बार जो 53वें फिल्म जो इफ्फी हुआ है, इसमें जैसे मैं कुछ फिल्मों का नाम लेना चाहूंगी। बांग्ला फिल्म महानंदा, फिर हिंदी भाषा की थ्री ऑफ अस, फिर द स्टोरी टेलर जो कि अनंत महादेवन ने बनाई, हिंदी भाषा में थी। फिर इसके अलावा इरुला भाषा में बनी फिल्म ढाबरी कुरुवी, उसके निर्देशक हैं प्रियनंदनन। कन्नड़ा भाषा की फिल्म हदिने लेंटू नानु कुसुमा। फिर तमिल भाषा की फिल्म है जय भीम किडा। ओडिया भाषा की फिल्म है प्रतीक्षा। मराठी फिल्म एकता काइजाल शेर शिवराज। मलयालम फिल्म है सऊदी विलक्का सीसी अरियप्पू। मैथिली फिल्म लोटस ब्लूम्स। तेलुगु भाषा की फिल्म सिनेमा बंदी और खुदीराम बोस। और इसके अलावा भोटिया भाषा में बनी सर्वप्रथम फीचर फिल्म। और देखिए मंच पर कुछ हरकत नजर आ रही है, आप क्या देख रहे हैं जेफरी? So right now is the introduction of the IFFI Film Festival. That's what I'd like you to Our audiences here have just seen the opening video of the 53rd International Film Festival, which according to our cue sheet says that they're ready to begin anytime. Cinematic celebration Geo True 5G presents 53rd International Film Festival of India, Goa, streaming free only on Voot की closing ceremony में आप सभी का हार्दिक स्वागत। This edition of IFFI was incredibly grand. It is a year that is historic for what it has achieved over the past 9 days. Today, to conclude our celebration and to host an evening to remember for years to come, we have with us the multi-award winning, one of the India's leading live talents and orator of distinguished reputation. She is India's preferred choice as anchor for prestigious project, a prolific writer and a communication coach.
She's recently made her film debut in Lal Singh Chadda. A believer in the dream of Bharat Ka Amritkal, please welcome the incredibly versatile, expressive Gitika Ganju Dhar. Yes, to bring it in, we've got the ravishing, beautifully dressed in a nice shimmering green sari, and the crowd has gone all loud. It is the wonderful, the gorgeous Gitika Ganjudhar, a well orator and a TV personality who's now taking to the mic. Ladies and gentlemen, namaste. यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का और देश विदेश से आए आप सभी चलचित्र के परवानों, दीवानों और कदरदानों का मैं गीतिका गंजूधर प्यार भरा स्वागत करती हूँ। ये Ladies and gentlemen, we are here to joyfully conclude Geo True 5G presents the 53rd International Film Festival of India, Goa, streaming free only on Voot. Just like the vibrant peacock, IFFI unfurled a rainbow of a total of 280 films from across 79 countries, including 25 Indian feature films and 20 non-feature Indian films. Yeah! भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI एशिया का सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल है और भारत का सबसे बड़ा व सबसे लंबा चलने वाला फिल्मी जमावड़ा. As India marches towards Amrit Kal, IFFI in its grand 53rd edition aims to serve as a one-stop destination for the world of filmmaking. सबका साथ, फिल्म इंडस्ट्री का विकास, सही मायनों में ये फिल्मों का अद्भुत महोत्सव था. जितने मस्त IFFI के ये पिछले 9 दिन रहे हैं ना, उतनी ही मस्तानी आज की ये शाम होने वाली है. बागों में बहार है, कलियों पे निखार है और हमको यानी कि IFFI को आप सबसे प्यार है. So with love and joy we bring you the closing ceremony of Geo True 5G presents the 53rd International Film Festival of India, Goa, streaming free only on Voot, Colors and Colors Cineplex, brought to you by India's Information and Broadcasting Ministry and the National Film Development Corporation, and hosted by the Government of Goa and the Entertainment Society of Goa. Ladies and gentlemen, tonight's event is directed and produced by Wizcraft Entertainment Agency. Devi aur Sajjano, let's begin the closing ceremony of IFFI Goa by saluting our beloved motherland. Please rise and sing along with Pride in Your Hearts, the national anthem of India. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे वंदे Vande! The International Film Festival of India celebrates the joy of world cinema. The festival is a common platform for filmmakers from across the world to project their excellence in film art, contributing to the understanding and appreciation of film cultures of different nations in the context of their social and cultural ethos, and promoting friendship and cooperation amongst the people of the world. For the festival's thumping success and widespread participation, I would like to thank all those who came from around the world.
आपके स्नेह और सहयोग ने इफी गोवा को इतना प्रभावी, महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण मंच बनाया है. So a big thank you to all of you who made this happen, really. सुपर हिट ब्लॉकबस्टर जोरदार, मजेदार, अनमोल और अहम था 53rd IFFI गोवा. Let's take a look at the highlights of this event. What a wonderful introduction there by the wonderful Gitika. Our viewers now going through glimpses of everything that went through this 53rd International Film Festival. So they kind of, in a nutshell, bringing in photographs and live videos of everything right from the day it was inaugurated till we are here. जी हाँ जेफरी, जैसा कि आपने कहा, इन 9 दिनों में जो कुछ यहाँ पर घटित हुआ उस सब का एक छोटा सा वीडियो बना करके प्रस्तुत किया जा रहा है श्यामा प्रसाद ऑडिटोरियम में, जहाँ पर बड़े बड़े स्क्रीन्स बने हुए हैं और जिन पर ये वीडियो दिखाए जा रहे हैं. और जैसा कि हम अभी देख सकते हैं कि श्री अनुराग ठाकुर, माननीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण, उन्होंने इसका उद्घाटन किया. फिर उसके बाद परेश रावल यहाँ पर आए और उन्होंने जो दर्शक हैं उनके साथ इंटरैक्ट किया, उनके साथ बातचीत की. फिर मणिपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ के काफ़ी सारे निर्माता, निर्देशक और इसी प्रकार से विभिन्न जो भाषाएं हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है वो इसमें पूरी तरह से परिलक्षित होती है और वो यहाँ पर अभी भी दिखाई जा रही है. विभिन्न जो प्रादेशिक भाषाएं हैं भारत की, तो उनका प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्में, उन भाषाओं के फिल्म उद्योग से जुड़े जो लोग हैं, उन सब ने इन 9 दिनों की अवधि के दौरान क्या क्या किया, वो सब एक छोटे से वीडियो के रूप में बताया जा रहा है. साथ ही साथ जो रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे उनकी भी झलक देखने को मिल रही है. और जो ऑडिटोरियम है वो तो पूरा भर ही चुका है. जेफरी, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि तिल धरने की भी जगह नहीं होगी, वो बात पूरी तरह से सही गई. You envisioned it, and yes, it is a house full. When we look at this video, it just gives me heartbeats, which is pumping a lot more. A vision that has actually come through. People, meticulous planning, years, I should say months and months of planning, and it all finally comes down to delivery within 9 days. Started on the 20th of November. And what a beautiful journey it's been. And I say kudos to all those involved, right from the different sections, just not the opening ceremony. What followed is close to 200, as Gitika, our hostess, said, close to 283 movies that were showcased. And just not that, we spoke about the kaleidoscope. We have to talk about the film bazaar. All these little sections at the film festival just makes it so international and so available to all these directors across town. जी हाँ, और विभिन्न, जैसा मैंने कहा था कि प्रादेशिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले जो शख्सियत हैं, जो प्रतिभाएं हैं, जैसे नागार्जुन, वे आए थे. कल AR रहमान यहाँ पर थे. फिर विदेशी जो फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोग हैं वे सब थे. तो बहुत सारा यहाँ पर प्रतिनिधित्व रहा. और देखिए, ये वीडियो अब खत्म हुआ और इसके बाद मंच पर आगे क्या हो रहा है, ये चलिए हम मंच की ओर चलते हैं. हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है और इसलिए आज की शाम हम उन डिग्निटरीज, फिल्म मेकर्स, फिल्म आर्टिस्ट्स, ग्रैंड मास्टर्स और फुल फोर्स टीम इफी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने इस साल इफी को एक नया रूप दिया, एक नई ऊंचाई का अनुभव करवाया, विश्व सिनेमा को नई राह दिखाई और सिनेमा के प्रति एक नई चाह जगाई. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. इस साल इफी का जादू था जोरदार. इसके लिए हम करते हैं आप सबका शुक्राना बार बार. देवियों और सज्जनों, इन गड़गड़ाती तालियों के कई हकदार हैं, पर सबसे पहले मैं इस मंच पर उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी जिनकी दूरदर्शिता ने इस साल के इफी को एक नए भविष्य का आधार बनाया.
bringing to IFFI the vision of the best in the world, the best in class. He's made the change and he's raised the bar. दिव्यदर्शी रंग रखने वाली आपकी नई, ऊंची और प्रभावी सोच ने भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक ट्रेल ब्लेजिंग मिनिस्ट्री का रूप दिया है. Sir, you are charismatic, dynamic, and truly a new age leader of our country. May I please invite on stage the Honorable Union Minister, Ministry of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri और Anurag अब Singh मंच Thakur पर ji to address the global सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर को न्योता दिया जा रहा है और वे मंच की ओर बढ़ गए हैं. सौम्य प्रतिभा के धनी युवा मंत्री, और वे अब संबोधित कर रहे हैं यहाँ उपस्थित सब जनों को. Namaskar, Honorable Chief Minister of Goa and my very dear friend Shri Pramod Sawant ji, Honorable Union Ministers, Honorable Representatives of Goa Legislative Assembly, members of IFFI Steering Committee, member of jury, international delegates, and friends from the world of cinema, media, and entertainment. Tonight we draw the curtains on the most enthralling, engaging, and entertaining International Film Festival of India ever. Over the last 8 days, we curated screenings of 282 films. That's nearly 35,000 minutes of viewing time. We featured 183 international and 97 Indian films in 65 international and 15 Indian languages from 78 countries worldwide. Over 20 master classes, in conversation sessions, and a long list of celebrities and events, out of which several sections were accessible not just physically but even virtually. If we not only entertained but also educated us, if we tickled our humor and refined their senses, if we opened up nuanced world of cinema for audiences across the region, both young and old, new and festival veterans. The diversity that was showcased here is the living embodiment of the very essence of Vasudev Kutumbakam that brought together creative thinkers, filmmakers, cinema lovers, and cultural enthusiasts from all over the world under one roof. The 53rd IFFI concludes having made many new beginnings. For the first time, we reciprocated our Cannes country of honor status by welcoming France as country of focus, marking 75 years of our diplomatic ties with France, and also India is celebrating the 75th year of independence. For the first time, IFFI had a technological park with a record footfall to showcase the latest innovations from the world of cinema. The exhibit presented the emerging world of virtual reality, animation, and innovations in storytelling. For the first time, the 75 young filmmakers who were selected competed in a 53-hour challenge to make films envisioning India at 100 years of independence. For the first time, we had a specially curated package of notable Manipuri films marking the 50 years of Manipuri cinema. And in the same breath, let me add, it remains my commitment to give a strong emphasis and provide a platform to regional cinema, because regional is no more regional, it has gone national to international. And this year, we have seen many films like RRR, KGF, and others making the international noise. For the first time, master classes were held in the partnership with film schools in Canada, OTT players, and Oscar nominees such as Kung Fu Panda director Mark Osborne, amongst many others whose sessions were jam-packed. Moving on, as someone who enjoys films and is learning from you, the masters of cinema, I wish to draw a comparison. Today, the world of cinema is bustling with raw talent
finding its voice from theatre schools, small independent production houses, and the hinterland of India. The platforms are new, whether it's short films on our mobile phone devices, movies on the go, or binge watching on OTT. We are seeing incredible talent being recognized, enthralling audiences and being loved by fans and doing great businesses too. This in some ways is similar to what various sports leagues did for raw talent in cricket, kabaddi, hockey, etc. India has always had talent. It just needed an opportunity to be seen without gatekeepers, where the audience determines their success. The advent of different streams of cinema, propelled by affordable handsets and cheaper data prices, is leaping ahead on sheer individual talent to showcase powerful and captivating stories to the world. Further, not only are the audiences enjoying the plethora of regional content, but also foreign content dubbed in national language, Indian language, and the regional languages, and vice versa. And that is why I am delighted to welcome one such star cast to India. The international star cast of the acclaimed Israeli series Fauda on Netflix is here today, my friends. The series has been hit in India and received a thunderous reception during the IFFI premiere of their 4th season. Shalom. Anaknu a Havim Fauda, Bokim Habib Habaim La Hahudu. So, well, we love Fauda and welcome to India, Lioraz and Avi. I welcome you and the entire star cast of Fauda to India. We are thrilled to have you and Israeli Ambassador Gilon. Your Excellency, thank you for being here at the 53rd IFFI in Goa. Further, I would like to take the opportunity to congratulate the superstar of our times, Shri Chiranjeevi, who will be as we made the announcement on the opening of the International Film Festival of India, that this year the Indian Film Personality of the Year award, which we declared on the opening, will go to Chiranjeevi for his tremendous contribution. Shri Chiranjeevi has had an illustrious career spanning nearly 4 decades and over 150 films that have left audiences spellbound. 40 साल सिनेमा जगत को दिए हैं, तभी तो ये चीखो पुकार सुनने को मिलती है कि जो शानदार काम आपने किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं. IFFI recognizes your art and we welcome you here today. In the end, I would like to again specially thank my friend and Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sabanji, and his entire team for their support. I would also like to thank my entire team from Ministry of Information and Broadcasting, National Film Development Corporation, ESG, for their continuous support to make this event a grand success. As we look towards the 54th IFFI next year, I hope it will continue to be a platform where ideas emerge and where cinematic innovation is showcased, where collaborations and co-productions are embarked upon and experience shared, and a place from where timeless cinema emerges for generations to enjoy and remember. Our goal is to build an enriching filming ecosystem in India and a future-ready industry that has the full support of the government under the able leadership of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. I would like to share one more experience. I'm also as the Minister of Youth Affairs and Sports. We receive a lot of delegations from world over. Recently, we had a delegation from Bangladesh few months back. And after the IFFI opening, I had the delegation of Central Asia countries from Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and all.
You will be pleased to know that the delegation of these countries, more than 80 youth of that country which participated, I hosted the dinner on the last day. All they wanted was to listen to the Hindi film songs, to the regional film songs. They talked about movies from the Mithun Chakrabarti's era to Akshay Kumar's films and to Mr. Chiranjeevi's film. That is the power of cinema, which cut across the boundaries. मैं कई बार कहता हूं कि हिंदी भाषा को बढ़ाने में जितना बड़ा रोल हिंदी फिल्म जगत ने अदा किया है, उसी तरह से उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं थी सिनेमा के लिए, क्योंकि अगर आपके कंटेंट में ताकत है तो एक रीजन, एक स्टेट के अंदर नहीं रुकता, एक देश के अंदर नहीं रुकता है, वो दुनिया के दिलो दिमाग पर राज करता है। ये ताकत भारतीय सिनेमा की है, और ये भारतीय सिनेमा की ताकत ऐसी है कि अगर आप आज भी रशिया या बाकी देशों में जाओगे, ईस्ट यूरोप में जाओगे, तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा राज कपूर जी की फिल्मों से लेके मिथुन चक्रवर्ती जी की फिल्मों से लेके शाहरुख खान और अक्षय कुमार जी की फिल्मों तक देखने के लिए। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो इम्पैक्ट है वो कभी कोई न्यूज़ चैनल या न्यूज़ के माध्यम से नहीं हो सकता। ये केवल एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के माध्यम से, और आपकी रिच कल्चरल हिस्ट्री जो है, हेरिटेज जो है, उसको दुनिया तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अवसर हमारा फिल्म जगत के माध्यम से मिलता है। और मैं देश के सूचना प्रसारण मंत्री होने के नाते विश्वास दिलाता हूं, हम फिल्म जगत के लिए जो भी सहायता चाहिए होगी वो करेंगे, और टेक्नोलॉजी के इस नए अवतार के रूप में हम पुरानी और नई फिल्मों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सब आए, आपने 53rd इफ़ी को सफल बनाया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और ये गोवा की ऑडियंस के बिना या देश भर के जो फिल्म के चहेते यहाँ पर आए हैं, आपके बिना ये सफल नहीं हो पाता। अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर का अभी संबोधन था। जैसा कि उन्होंने बताया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों और निर्माण दलों को भारतीय बाजार के साथ परिचय कराने का ये एक अवसर था, और साथ ही साथ भारत की विभिन्न भाषाओं को विश्व के लिए योगदान जो उन्होंने दिया है वो भी रेखांकित करने का सुनहरा अवसर था। After we heard the wonderful speech by the Honorable Minister Anurag Singh Thakur, we're now clearing the stage for another of our hosts, Mr. Samir Kochar, who's now taking to the stage. Hello Goa, how are you doing? It's my favorite place in the whole world. Familiar faces in the front row, a lot of wonderful faces at the back. It's so good to be out here. Good evening, a very good evening, ladies and gentlemen. It is a privilege to be here in front of so many dignitaries and the icons of cinema. I welcome you all to Geo2 5G presents 53rd International Film Festival of India, Goa, streaming free only on Boot. एक बार इफी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं दोस्तों। It's been a tremendous year in the IFIs. Wonderful things happened. This year, IFI held an online poster design contest, the one and only Ray, honoring the genius filmmaker Satyajit Ray. We received 635 submissions, out of which the jury selected 75 film posters and 3 winners amongst those 75 posters. The number 75 also celebrates Azadi Ka Amrit Mahotsav. Members of the contest jury included living legend Shri Shyam Benegal sir, Srimati Anjali Ila Menon, Shri Dhimant Vyas, Shri Prakash Bal Joshi and Shri Radha Vinod Sharma. इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. And to present this first award for the evening, this special award, may I please request some very special people to come on stage. The Honorable Union Minister, Ministry of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Government of India, Shri Anurag Singh Thakur ji के लिए जोरदार तालियां.
So now we are slowly coming into that part where the awards are going to be declared, and of course Samir Kochar inviting our dignitaries up right now, currently on stage. Our Honorable Chief Minister of Goa, Shri Pramod Sawant, making his way up onto the stage. Animal Husbandry, Dairying Government of India, Dr. L. Murugan, to please come up on stage. Yes, they've all come down here for the closing ceremony. Coming up now, Dr. L. Murugan, Minister of State for Information and Broadcasting. जी हाँ, जी हाँ, और Round of applause for him, ladies and gentlemen. With Bharat Godbole in second and Aniruddha Chatterjee in third place. They made some wonderful और अब posters पुरस्कारों of three की of them. घोषणा हो रही है Two of them are here present with us. और जो Anuradha is not here. विजेता But we हैं congratulate him वो on his स्टेज की ओर achievement. जा He will रहे receive cash हैं। prizes ये of 1 पुरस्कार lakh जो rupees, अभी घोषित किया जा रहा है, ये है 75,000 सत्यजीत and रे 50,000 rupees पोस्टर respectively. डिजाइन कंटेंट, उसका ये पुरस्कार है। और माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के हाथों ये पुरस्कार Give it up दिया for गया। Sayak Das, Bharat Godbole and Aniruddha Chatterjee. So the first runner-up in this category of the poster contest, Bharat Godbole, first runner-up, Anirudh Chatterjee, second runner-up, and Sayak Das from Goa, the winner in this poster contest. Brilliant. देखिए यहाँ पर भी गोवा का बोलबाला रहा है ना जेफरी? Well, I say when creativity is concerned, Goa comes out first. जी, जिन्होंने अपनी एक्स्ट्रॉर्डनरी कंट्रीब्यूशन की बदौलत इंडियन सिनेमा को संवारा और फिल्म जगत की शान बढ़ाई है। This is the award for the Indian Film Personality of the Year. पहले ताड़ियां पड़ चुकी हैं इनके और लिए। अब जिन्हें मैं और अब इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये पुरस्कार दिया जाएगा। और जैसा कि सब जानते ही हैं, तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार चिरंजीवी वो यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्हें अब मंच की ओर आमंत्रित किया जा रहा है। देखिए, चिरंजीवी तेलुगु फिल्मों के महानायक माने जाते हैं और अभिनेता तो वो हैं ही, फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, साथ ही साथ वे पद्म भूषण भी हैं। 150 से अधिक फीचर फिल्मों में उन्होंने काम किया है और तेलुगु के अलावा हिंदी, कन्नड़ और तमिल पिक्चरों में भी काम किया है। And the entire audience has gone into a rapture of laughs and claps, and just shows how much he's loved over here. Standing ovation, in fact, for his contribution to just not the world of cinema. What a philanthropic contribution he's done with blood donation camps and schools and hospitals. Great job, Chiranjeevi. Our hats are raised for you. Currently watching a video that showcases everything, right from a superstar to all his contributions. जी हाँ, उनके ऊपर, उनके जीवनी के ऊपर एक छोटा सा चलचित्र बताया जा रहा है जहाँ पर वे माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम से पद्म भूषण स्वीकार करते हुए भी दिखाई दिए गए। फिर विभिन्न फिल्म पुरस्कारों को स्वीकार करते हुए उनका ये वीडियो दिखाया जा रहा है। और जैसा कि जेफरी ने बताया कि वे रक्तदान के शिविर लगाते हैं, तो वे भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। और जैसा कि ये इस वीडियो ने बताया कि 10 लाख से अधिक यूनिट रक्तदान के द्वारा उन्होंने उपलब्ध करवाया है। और अब चिरंजीवी मंच पर प्रस्थान कर चुके हैं, मंच की ओर। 32 oxygen banks, so many units of blood in a camp that he's organized, being felicitated right now, and I think he deserves it, just not for his role. Dr. Chiranjeevi, that's what he is, being now invited up on stage to be receiving the Indian Personality of the Year award. उन्हें माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने दुशाला पहना करके सम्मानित किया है और अभी वे स्टेज पर ही खड़े हुए हैं। पृष्ठभूमि में वीडियो चल ही रहा है। ये चिरंजीवी
एक प्रकार से फिल्मों में एक लार्जर देन लाइफ, फिल्मों में ही नहीं वैसे भी लार्जर देन लाइफ छवि रखते हैं। आइए हम मंच की ओर चलते हैं। 40 years, 150 films. He's here with us today. The crowd is loving it, sir. We're all loving it. We'd love to hear from you, sir. Please, the stage is yours. Please come and say a few words. It'd be great. From there itself, right, sir? You can say from there, sir. Could you get a mic, please, for him? Yes, the superstar now being invited to say a few words, and he's on the mic. Let's listen to him. Honorable Minister for Information and Broadcasting, Shri Anuragji, and Honorable Chief Minister of Goa, Pramod Sawantji, and Honorable Minister of State I&B, Thiru Murugan Avargal, and my friends, my colleagues from Cine Film Fraternity, and my fans, everyone. Media. I wish to thank IFFI and Government of India for giving me this wonderful award. A great honor. Few recognitions will have a special, and this award is one such. I born as a middle class family to a humble parents. I was, before entering into the film industry, I was Kodidala Shivashankar Varaprasad, and now my fame, my name, my charisma, all privileges, all the invaluable love and affection from my fans, and whatnot, everything to the film industry. I owe a lot to this film industry. And for this, I always have my gratitude towards my parents who gave birth as Shivashankar Varaprasad, and the film industry which gave me birth as Chiranjeevi. I'm really indebted for whole time, my lifetime, to the film industry. I would like to tell how great this film industry and how great this love and affection bestowed on me. I was here for more than 45 years. After this 4.5 decades, 1 decade I missed. I was into the politics. So somehow reason I have to come back again to the film industry after 10 years. So that time I was skeptical how people receive me. Are they shower same kind of love and affection on me? I was having my doubts because generation has changed. And that time when I committed a film, and the amount of love and affection, the position in their hearts was intact. It never changed. In fact, it has doubled to my surprise. So really, that is a sentiment, that's a bonding what I have with my fans, with my film lovers. So really, I'm promising now, my dear friends, I never leave these films for lifetime. I'll be here with you. I will have place in your hearts forever, permanently. Mana Telugu ప్రేక్షకులు, తెలుగు అభిమానులు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా సరే వాళ్ళ ప్రేమకు నేను దాసోహం, వాళ్ళ ప్రేమకు నేను దాసుణ్ణి. ఆ ప్రేమ కావాలి, ఆ ప్రేమ నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది, ఇలాంటి గ్రేట్ అవార్డ్స్ అని పొందేందుకు అవకాశం కల్పించింది.
కాబట్టి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక జీవితాంతం కృతజ్ఞతతోనే ఉంటానని ఈ సభా వేదిక మీద మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అండ్ ఆన్ దిస్ అకేషన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు say my heartfelt gratitude to our beloved Prime Minister ji. Prime Minister, he has extended, he actually acknowledged, very kind acknowledgement for the award when it conferred on me. So on behalf of everyone, I would like to thank our Prime Minister Narendra Modi ji. Thank you, sir. Thank you so much. Now, finally, I would like to thank my friend Akshay Kumar is here. And very recently, my son Ram and Akshay Kumar, they shake their legs in one of the TV shows. It's fantastic. He's my friend, but yet now he's competing with my son. That is the charisma of my strength and energy of Akshay Kumar. Wonderful, my friend, wonderful. So finally, I would like to thank the Goan and IFI and INB Ministry and the Government of India, my friends, my producers, my directors, my co-stars, my technicians, each and everybody who has contributed, who has supported me to reach this level, to this megastar level. For everyone, I bow my head and thank you so much. I love you. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you. Chiranjeevi sir, before you leave, I have to ask you just a couple of questions. A word that best describes him. But he humbly thanked his parents to give birth to him as Konidela Siva Sankara Vara Prasad, and he thanked the cinema goers who rechristened him as Chiranjeevi. Beautiful speech. Coming back to the film industry from politics, then only I came to know the value of this. I'm so fortunate to be here in this film industry. I recommend if anybody having to come into the idea of coming to the film industry, please do come. This is a corrupt-less profession. Wherever you may find corruption, but here no corruption. If you have talent, you project it. As per your talent, you will grow. You will see the height, sky high. But there's no guilt conscious, and you will be pride all the time. So that's how I grew up. And sir, may you continue to go on forward and you keep shining. We all love him. Round of applause for the mega star, ladies and gentlemen. Thank you so much, sir, for being on this very stage with us. Well, Dipshika, he rightly says he's here to stay. So to all his fan followers, he spoke with conviction. जी हाँ बिल्कुल. और ये माननीय मंत्री बोल रहे हैं अभी, कुछ उन्हें सुने. क्या कोई दूसरी ऑप्शन भी है? कोई फिल्मों में जाए और फिर वापस राजनीति में आए तो स्वीकार होगा? हम दोनों बाद में बात करेंगे सर. थैंक यू. तो चिरंजीवी गारू के लिए एक बार जोरदार तालियां सबकी. Beautiful humor right up on the stage. Anurag Singh Thakur asked Chiranjeevi if there's any possibility of a politician getting into the movie industry, to a thunderous rapture of laugh. बिल्कुल. देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी, मतलब एक जो दोस्तों के बीच में बातचीत होती है, उस प्रकार की बातचीत हमें का जायजा लेने का मौका मिला. जैसा कि चिरंजीवी जी ने कहा कि फिल्मों में एक बहुत बड़ा मतलब जो कहते हैं ना कि कला के लिए समर्पण अगर आपके अंदर है तो आगे आने का आपको मौका मिलेगा. और अब गोवा के माननीय गवर्नर राज्यपाल स्टेज पर आ रहे हैं. और अब सिनेमा वर्ल्ड के ऐसे स्टॉलवर्ड्स को ऑनर करने की बारी है जिनके कंट्रीब्यूशंस इंडियन सिनेमा को आगे बढ़ा रहा है. यहाँ पर कुछ शायद परिवर्तन सा लगता है. स्टेज पर अब वे आमंत्रित कर रहे हैं फिल्मी दुनिया से जुड़े कुछ भारी भरकम नामों को, जिनके लिए बस ये कहना काफी है कि ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, कोई डोर मुझे खींचे तेरी ओर लिए जाए. दोस्तों, ये गाना नहीं है, हमारे जीवन का हिस्सा है. रोमांस की वो पुकार है जिसे पहली बार हमने
आशा पारिक जी के चेहरे के साथ सुना। ये वही चमकता चेहरा है जिसे देखकर सिनेमा लवर्स कहते हैं, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती हैं काफिर आंखें किसका निशान। एंड शी सिटिंग राइट देयर इन द फ्रंट रो, अपनी अदाकारी की स्याही से फिल्मों का कल लिखने वाली, द आइकन ऑफ इंडियन सिनेमा, द जुबली गर्ल, पद्मश्री आशा पारिक जी के लिए जोरदार तालियां। And still very, very graceful, Dipshika, the wonderful, the honorable Asha Parekh ji. जी बिल्कुल, देखिए काले रंग की साड़ी में वे आ रही हैं, इतनी सौम्य लग रही हैं, हालांकि उन्हें थोड़ा सा चलने में सहायता की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन जो उनका आकर्षण है वो बरकरार है। लेकिन ये जो सहायता उन्हें चाहिए थी वो सिर्फ स्टेज तक पहुंचने के लिए, वो सीढ़ी चढ़ने के लिए चाहिए थी, और अब माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री दुशाला उड़ा करके उनका सम्मान कर रहे हैं। साथ में गोवा के मुख्यमंत्री उन्हें एक स्मृति चिन्ह समर्पित कर रहे हैं। There's a beautiful saying, aging gracefully, and Miss Asha Parekh, really, really looking graceful at her age and carrying herself so with such fine finesse. जेफरी, क्या आप जानते हैं कि आशा जी ने एक नृत्य संस्थान स्थापित किया जिसे चौला देवी नाम दिया, लेकिन ऐसा हुआ है कि लोग उसे चौला देवी नहीं, उस संस्थान को आशा पारेख के नाम से जानते हैं। True. कभी बतौर एक्ट्रेस, कभी बतौर डायरेक्टर, कभी बतौर प्रोड्यूसर। इन 70 सालों में मैम आपका सबसे यादगार पल, मोमेंट क्या रहा है? जब मेरी पहली फिल्म दिल दे के देखो रिलीज हुई थी, जो याद रहेगी जिंदगी भर। वाओ मैम, दौर बदलते रहते हैं, नए चेहरे आते रहते हैं। आज के चेहरों में इन द करंट ब्रीड ऑफ एक्ट्रेसेस मैम, व्हिच इज योर फेवरेट एंड व्हाई? Today's? Yes, ma'am. I like Deepika Padukone very much. I think everyone will agree about it. And I wish her all the best. I like her very much. Ma'am, and we love seeing you every time. Thank you so much for being in Goa. Thank you so much for blessing our stage. Round of applause for Asha Parekh, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for being here. We're so privileged, really very, very privileged to have Asha Parekh in our midst over here. She's taken time out, and I think she deserves all the acknowledgement. Being led down the stage by the very stylish Akshay, leading the lady down the aisle. दोस्तों, अब इफी उन्हें ऑनर करना चाहता है जो इंडियन फिल्मों के लिए जीते आए हैं और इंडियन फिल्मों के असली जान बन चुके हैं। उन्हीं के डायलॉग के जरिए कहें तो वो पहले फिल्मों के खिलाड़ी थे, अब पूरा खेल हैं। एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो, बायोपिक्स हो, यू नेम इट एंड ही हैज डन इट ऑल इन हिज फिल्म करियर। और सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, ये रियल लाइफ में भी हीरो हैं, क्योंकि सोशल प्रॉब्लम्स के खिलाफ लड़ना और आवाज उठाना इनकी दूसरी पहचान है। द मैन हु हैज सिंगल-हैंडेडली was responsible for India's interest in martial arts, fitness, healthy lifestyle. Let's welcome the one, the only, the Khiladi in the house, Padma Shri Akshay Kumar. Seriously, we'd like to know what he drinks, what he eats, how he gets his physique in shape. A man who never ages. I think anything that he's touching when it comes to movies is turning to gold, and now being felicitated, and I think it's well deserved. Quite an inspiration to the youth, quite an inspiration to the young about fitness, about health, about Not just to acting. the young, not just to the young, वो हर एज ग्रुप के लिए ये फिटनेस की जो बात है, और अक्षय अपनी जिंदगी से भी इसको साबित करते हैं, क्योंकि जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है, वो खुद कहते हैं कि वे किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। और वे अभी क्या कह रहे हैं, चलिए वो सुनते हैं। मुझे पता है मुझे स्पीच देनी थी, लेकिन आप पूछ लो, जो आपके मन में कुछ ना कुछ तो होगा पूछने के लिए। नहीं सर, जो आप बोलना चाह रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। नहीं, कोई बात नहीं, आप पूछ लो। सर, हाउसफुल यहाँ पर भी है। पहली बात, हाउ डज इट फील टू बी इन गोवा सर, इफी के मंच पर? मैं तो हर साल इधर आता हूँ, मेरा एक छोटा घर भी है इधर, और हर साल ही आता हूँ। हमारी छुट्टियाँ इधर ही बनती हैं। इस साल भी दिसंबर में मैं और मेरा परिवार इधर आने वाले हैं, हम लोग यहाँ गुजारने वाले हैं वक्त। लेकिन जो मज़ा क्रिसमस टाइम पे, न्यू ईयर्स टाइम पे इधर आता है, जो मौसम होता है, बहुत ही मज़ेदार है। यू गाइज आर सो लकी, ऑल द पीपल ऑफ गोवा। दिस इज़ वन प्लेस आई थिंक एवरी फिल्म इंडस्ट्री पीपल वांट टू कम हियर। कहाँ चले? गोवा।
कहाँ जा रहे हो? गोवा. जिसको देखो गोवा ही जा रहा है, पता नहीं क्या है यहाँ. That's it. But thank you very much, अनुराग जी का, प्रमोद सावंत जी का, मुर्गन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और सारे ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ इनवाइट किया इतने अच्छे फेस्टिवल के लिए. ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि चिरंजीवी साहब, आशा पारेख जी यहाँ बैठे हैं, इनके सामने कुछ बोलना ही नहीं चाहिए ज़्यादा. बस बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जेफरी, आपको बहुत खुशी मिली होगी क्योंकि अक्षय कुमार ने देखिए कितनी गोवा की तारीफ की है. अरे यार, खिलाड़ी नंबर 1 है. बिल्कुल सही. देखिए, गोवा के साथ एक बात है कि गोवा सिर्फ ग्लैमर से ही जुड़ा हुआ नहीं है. गोवा की अपनी विशिष्ट संस्कृति है और उसकी संस्कृति को फिल्मों में भी देखने को मिलता है. जैसे एक फिल्म आई थी बॉबी, उसमें गोवा की संस्कृति बहुत अच्छी तरह से देखने को मिली थी. Well, you can all depend on movies. We'll go back to the host. Rasanjit, if you get a few words with you. Good to see you. Good to see you. Welcome to Goa. Welcome to IFFI. Yeah, this is, I think, is my 8th or 9th time. Thank you so much. I'm so honored to be here today, of course, and with a personality like Asha ji. Of course, I think you all know Biswajit ji, and Asha ji is that Pukarta Chala Hu Main. So whenever I see Asha ji, I try to sing that song. Yeah. So she's sitting here, and of course, I love Goa, of course, and this year, of course, I had presented a film called Dosto Ji, and the film has been selected in IFFI. Last moment, I really could make my time to visit, because whenever I come to Goa, I think this is something which I take back. And thank you for calling me, and all the best for all the films which has been selected in Goa. It's the most important. We look for this kind of a platform for our cinema, good cinema. Thank you so much. Thank you. Thank you. सर, आप गाने की बात कर रहे हैं, आप बोल ही रहे हैं, तो एक बारी गाना गा ही देते हैं उनके लिए. क्या कहते हैं आप सर? ट्राई करें. आशा जी शर्मा रही है. अच्छा गाएंगे तो शायद मुस्कुरा भी देंगी सर, शर्माते शर्माते. पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता. Thank you so much. Thank you. Round of applause. Round of applause for you. Thank you, brother. Keep going strong. तो ये थे प्रसेनजीत चैटर्जी, बांग्ला फिल्मों में जिन्होंने काफी नाम कमा रखा है. इसके अलावा वे अन्य फिल्मों का भी उत्पादन करते हैं, और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि ये बॉलीवुड एक्टर विश्वजीत के सुपुत्र हैं. तो अभी ये स्टेज पर थे, इनका सम्मान किया गया, और इन्होंने आशा जी के लिए ये गीत भी गा करके सुनाया. अपनी फिल्मों से हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं, तो कभी हंसी हंसी में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को दूर भगाते हैं. तभी तो इनका फेमस डायलॉग है, मर्द वो होता है जिसे दर्द नहीं होता, मर्द वो नहीं होता है जिसे दर्द नहीं होता, मर्द वो होता है जो ना किसी को दर्द देता है ना देने देता है ना सर? बात है दम में, बंदे में भी दम है. लेडीज एंड जेंटलमैन, हिंदुस्तान में जब आशीर्वाद मिलता है तो लोग बुजुर्ग आयुष्मान भव कहते हैं, और जब इंडियन सिनेमा को आशीर्वाद मिलता है तो उसे आयुष्मान खुराना कहा जाता है. नेक्स्ट अवार्ड is for the national award winning actor Ayushmann Khurrana. They all have set their feet right here on the shores of Goa. Ayushmann Khurrana, looking like that true celebrity, all clad in an off-white suit and jacket.
being felicitated up there. He is quite a star, isn't he, Dipshika? यस एब्सोल्युटली। और देखिए आयुष्मान खुराना वो न सिर्फ एक एक्टर हैं, वो एक गायक भी हैं। और अभी देखिए उन्हें गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी के द्वारा एक स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर मुरुगन द्वारा भी एक छोटा स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। और क्योंकि वे युवा हैं तो सीधी सी बात है कि युवा दर्शकों के साथ वे बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं, लेकिन वे एक बहुत उम्दा एक्टर हैं। देखिए वो अब सबको संबोधित करने जा रहे हैं, आइए सुनते हैं। मुरुगन सर, अनुराग सर, सावंत सर को सादर प्रणाम। चिरंजीवी सर, आशा पारिक मैम को चरण स्पर्श, राणा दुग्गुवती को बहुत सारा प्यार, मानुषी चिल्लर को प्यार और सबको बहुत सारा प्यार, शर्मन जोशी को प्यार। यहाँ पर आना बहुत बड़ा सौभाग्य है और समीर कोचर इनके साथ मैं आईपीएल होस्ट कर चुका हूँ और ही इज द ट्रू रॉक स्टार ऑफ द इवनिंग। गुड टू सी यू मैन। Good to see you, brother. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। गोवा जब भी आते हो तो यहाँ की वाइब भी अलग होती है। कभी भी मैंने फॉर्मल्स नहीं पहने गोवा में, मेरा लगा बीच फेयर में जा सकते हैं शायद, बट बीइंग फॉर्मल इन गोवा इज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट। और अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर द वैलिडेशन, for this gratification. We always look out for acknowledgements, and this particular award means a lot to me. I've actually completed 10 years in the industry, और social, cultural जितने भी मुद्दे हैं मैंने उठाए हैं फिल्मों के जरिए, और आज यहाँ पर खड़े होकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। Thank you for your blessings. आयुष्मान भवा। आप गोवा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ अलग ही लगता है। Maybe it's the पानी का रंग in Goa. You saw it is that wordplay there, because we are here. And we'd love to hear a few lines. Goa, would you like to hear a few lines from Ayushman? You would, right? So, 2-3 लाइनें तो हो जाए। Rana is looking very angrily towards you. He's a big, tall guy. तो गाना ही पड़ेगा यार, हाँ? No? Smiling? Okay, fine. Rana's smile also sometimes feels angry, no? मुझे पता है समीर बहुत अच्छा गाते हैं, by the way. Sir, बिल्कुल साथ में करेंगे, but let's hear you. माहियान आया मेरा, माहियान आया, माहियान आया मेरा, माहियान आया, रांझना आया मेरा, माहियान आया, माहियान आया मेरा, रांझना आया, खादा नूर वेख के अखियां चो हंजुर उड़ दे। Thank you so much. Round of applause for Ayushman! How talented is he, right? He looks good and he sings well. All the gifts have been given to one person. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वे गायक भी हैं। जेफरी, आप मेरी बात का शायद यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आपने सुन लिया और आपने मान भी लिया है। And Dipshika has a twinkle in her eyes when she mentioned Ayushman Khurrana. क्यों नहीं, क्यों? वो से हर आयु वर्ग को पसंद आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ना सिर्फ बहुत गुड लुकिंग है, वो एक बहुत उम्दा एक्टर हैं। अगर आपने उनकी फिल्में देखी हो तो आपको पता चलेगा जेफरी। लेकिन अभी चलिए हम चलते हैं मंच की ओर कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे सितारे यहाँ पर आए हुए हैं। और हम सब बाहुबली के भलाल देव को तो जानते ही है ना। The Man Mountain is in the house, ladies and gentlemen. Give it up. देखिए जो जिस प्रकार का जो विवरण दिया जा रहा है मैन माउंटेन, तो आपको शायद थोड़ा राणा दग्गुबाती। He stands tall. Seriously, I think must be 7 feet. I think. नहीं, 7 feet तो नहीं। Man Mountain. Let's give him that description. पर यहाँ देखिए ना, वो बाकी सारे जितने भी गण्यमान्य लोग हैं उनसे कम से कम 6 इंच तो ऊपर ही हैं। और अभी उनका माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने दुशाला उड़ा करके सम्मान किया, और अब माननीय मुख्यमंत्री गोवा के उन्हें स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। साथ ही डॉक्टर मुरुगन, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री ने उन्हें स्मृति चिन्ह दिया है अभी। और साथ ही जो होस्ट है आज के इस समारोह के, उन्होंने उन्हें माइक्रोफोन दिया है कि वे कुछ बोले, और वे बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं। 10 years is only a hope, and usually it's a want that I put out there that we have cinema that's just not 2D, but it's interactive in some form. So I think that's where we'll get to. You've donned so many hats in your career, behind the screen, on the screen. You have multiple businesses that you run. What excites you the most? I just try to get the job done. So I figured out a bunch of careers in the movie business just by doing that. So. And how do you feel? How do you feel being at IFFI at the closing ceremony tonight? Well, firstly, sir, a huge honor. Thank you for having us here. And
with today's changing trend in terms of content, I think festivals create the ecosystem for independent voices to thrive. Yeah. So many more like this. Congratulations to everyone who's participated, everyone who's won. And it's, again, truly an honor, sir. My last question to you. How's the weather up there? How's the weather? You're pretty tall, man. Is it cooler? Is it cooler up there? Yeah, it's pretty much. Well, you're absolutely cool, man. Round of applause Thank for you, Anand sir. Dukabati, Thank you. ladies and gentlemen. Thank you for being here with us. 6.2 to be precise, Dipshika. That's his hit. 6.2 of panache, the style, the personality that he brings with him. हाँ, आप उनकी हाइट की बात कर रहे हैं तो 189 सेंटीमीटर उनकी हाइट है, अगर हम सेंटीमीटर में बात करें। और बाहुबली पिक्चर अगर आपने देखी होगी तो आपने उसमें से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, क्योंकि वो लगते भी वैसे ही हैं बाहुबली। और अब मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है और उनके साथ बुलाऊंगा मिस इंडिया मानुषी चिल्लर। अब अभिनेत्री तो है ही, वो मिस इंडिया भी रही, फिर मिस वर्ल्ड रही 2017 में, और पेशे से वे एक डॉक्टर भी हैं। और साथ ही बुलाना चाहूंगा उस एक्टर को who believes that making the world a better place via his cinema. He has proved that his acting can really brighten up audiences worldwide. Let's give it up for the very uber cool Mr. Sharman Joshi. जेफरी, आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी तो आपको राजू रस्तोगी का किरदार याद होगा, तो वो शर्मन जोशी द्वारा निभाया गया था और अभी उन्हें स्टेज पर आमंत्रित किया गया है सम्मानित करने के लिए। And I think they deserve all the credit for all their contributions that they've done in this world of Bollywood. 3 Idiots, what a super film that is, and his role in that, amazing, isn't it? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साथ ही उनके साथ उपस्थित हैं ईशा गुप्ता, जो कि स्वयं भी एक अभिनेत्री हैं। तो इन सबको फिल्म जगत में योगदान देने के लिए यहाँ पर मंच पर आमंत्रित किया गया और सम्मानित किया जा रहा है। Each of them being given a shawl, an NFDC souvenir, and IFFI memorabilia, each of them, so that they can remember this, the 53rd closing ceremony. Ladies and gentlemen, it's amazing. When I look at this stadium right now, I realize that IFFI is truly a place where Indian cinema unites. ये एक festival of cinema नहीं है, बल्कि it is a magical land of cinema. From all across the country, यहाँ मुझे पूरा इंडिया दिख रहा है। अक्षय कुमार से लेकर राणा डोगबाती तक, आयुष्मान से लेकर चिरंजीवी सर तक, आशा पारेगी से लेकर मानुषी चिल्लर तक। This stage truly represents the power of India. एक बारी इफी के इस मंच के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। Now we have something very special that's going to happen on this very stage right now, ladies and gentlemen. Anurag sir, will request you to please come back on stage. Round of applause for Anurag ji. We're bringing in the Honorable Minister Anurag Singh Thakur. He's moving up and down the stage because, yes, he's the man who makes it happen here. His vision, and it's all coming to pass. Indian audiences towards Israeli content online. Now, India is one of the topmost countries that consume Israeli content. Dipshika ji, we're talking about the teleseries Fodder. You're a big fan of that series, isn't it? बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे ये सीरीज बहुत पसंद आई। OTT सीरीज ही ये दरअसल एक किरदार बताया है डोरॉन, जो कि इजरायली डिफेंस फोर्स से सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन उसके बाद उससे रहा नहीं जाता है। वो आतंकवादियों को पकड़वाने में बार बार मदद करता है। तो किस प्रकार से आतंकवादी हैं और कुटेव चलते हैं, और देखिए और कैसे उन्हें पकड़ा जाता है। देखिए फोदा की जो कास्ट है और डोरॉन का जिसने किरदार निभाया लियो राज, उन्हें स्टेज पर आमंत्रित किया गया है। और साथ ही आवी इशरफ, जो कि सीरीज के क्रिएटर हैं, उन्हें स्टेज पर आमंत्रित किया जा रहा है। Thank you so much, sir, for being here with us. Now, Israel and India share a special relationship, sir. Israel's creative content is being loved across the world. And what do you feel, sir, is the future for content creators from both the countries? I don't know what is the future, but I know what is the past. We as Israelis grew up on Indian film industry. We are humbled. Our industry is so small next to yours, and we are humbled that our
Fauda and other series are so popular in this wonderful country. So do you have any favorite Indian shows or any Indian movies that you have personally watched? I've watched many, but being a diplomat, I don't go into ditch holes. You know, I will name one, I will not name the others. We really enjoy watching a variety of Indian films. That's great to have you out here. Anurag sir, if I could ask you, you visited Israel and both nations have come closer in the last few years. Do you feel Israel's innovation and India's creativity can be a powerful combination to leapfrog in the creative economy space, sir? Shalom, and let me first welcome His Excellency the Ambassador of Israel and the star cast of Fauda. You know, India and Israel share a very special relation. We have conflict in the neighborhood. At the same time, there's a lot of challenges. But we have a strong history, thousands of years history, which we are very proud of, Israel as well as India. We work together in many areas, especially in the field of security, to many other fields. I still remember my first visit to Israel. That was way back in 2009. I visited Israel many times post that. But one thing I liked about Israel was their startup ecosystem. They believe in technology, they believe in entrepreneurship. And after watching the Fauda, I can say, here is the moment to forge partnership in another area, which is the field of cinema, filmmaking. They know technology well, India know technology well. There has to be co-production, there has to be collaboration with the Israeli counterparts. And I'm sure where India has, you know, being the largest filmmaker in the world, and India will be the content hub of the world, this is the right time to come together, collaborate, and reach out to the world. Make film around those stories which are not told to the rest of the world. And this is the right time to forge partnerships, and I'm looking forward for such engagement in the future. Not only with the Fauda star cast, that is one, but we look forward for people like Mr. Chiranjeevi, Mr. Akshay Kumar and others who are available here. From regional to national and to international, I think there are many, many possibilities here. And India is the place, and Israel is the right partner to be. Well, we certainly hope this partnership, this collaboration reaches great heights in the future. Thank you so much, both of you, for being with us. And please take your seats. Round of applause for them, ladies and gentlemen. भारत में इज़राइल के राजदूत अभी मंच पर थे और उन्होंने बहुत खुशी प्रकट की कि किस प्रकार से इज़राइली धारावाहिकों को भारत में स्वीकारा जा रहा है और उन्हें लोकप्रियता मिल रही है। साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी ये बताया कि इज़राइल भारत के साथ एक अच्छा साझेदार साबित हो सकता है, क्योंकि वे वैसे भी दोनों देश बाकी अन्य क्षेत्रों में अच्छी साझेदारी रखते हैं, अच्छी समझ रखते हैं। और अब फौदा जो धारावाहिक है उसके निर्माता लियोराज और आवी इशारोफ मंच की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए, हाथ जोड़ करके उन्होंने नमस्कार किया है। लियोराज जो हैं, उन्होंने फौदा सीरीज में मुख्य किरदार अदा किया और आवी इशारोफ जो हैं वे पेशे से एक पत्रकार हैं और जो पश्चिम एशिया की राजनीति है उस पर उनकी गहरी पकड़ है। तो लेकिन साथ ही साथ वे इस जो सीरीज है फौदा उसके निर्माता भी हैं। तो अभी ये दोनों महानुभाव मंच पर उपस्थित हैं और जो संचालक है वे उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। 190 countries across the world. Today we are fortunate enough to have the creators present in our stadium. Before that, chaliye, let's look at the teaser first of Fauda Season 4. Can we have the teaser, please? लेकिन उससे पहले फौदा का जो चौथा सीजन आने वाला है उसका ट्रेलर यहाँ वीडियो पर दिखाया जा रहा है। यूँ तो ये सीरीज हिब्रू में बनी है, लेकिन इसका अंग्रेजी में रूपांतर भी उपलब्ध है और ये पूरा धारावाहिक
भारत में बहुत लोकप्रियता प्राप्त किया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में ये बहुत लोकप्रिय हुआ है, क्योंकि ये एक ज्वलंत समस्या टेररिज्म, आतंकवाद जो है उससे निपटता है। उसके बारे में ये पूरा का पूरा धारावाहिक है। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इजराइल काफी हद तक और काफी सफलता से आतंकवाद पर नियंत्रण रखे हुए है। देखिए, अब लियोराज और आवी इशारोफ मंच पर हैं और जो संचालक हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। Actually, it's the first time for me to come to India and to Goa, and to come all the way from Israel and to arrive to this amazing place and to see all those amazing people that came here to see the first episode of 4th season of the premiere, the world premiere through Netflix, of course. It's a great honor. It's a huge honor, and I can only say thank you, Shukrayeh, to everyone, to Netflix, of course, Sir Minister that invited us, Mr. Ambassador, Mr. Governor. Thank you all for inviting us to this amazing evening. But Fauda as a show has become a rage globally. I mean, there's so many fans of it across the world. How does that feel to have so many fans around the world just waiting for season after season to come out? How does it feel? It's amazing. It's thrilling every time that we meet people that are giving us so much love. Here in India, you know, we just got to the immigration when you're stamping the passports. So the guy over there looked at me and he said, "Oh, I just watched your show three times." There you so go. for me to see that, I just hugged him. I tried but it was hard. But we are so excited, first of all, to be here, and we love the people of Goa. We love the people of India. We are so connected. We feel together. Thank you for such a warm welcoming. We really, really love you. I can tell you, all of us love you as well, because we love the show, we love the series, we eagerly await it. Now, what can we look forward to? We don't want the entire thing from you, but a sneak maybe into what season 4 could be like for us, maybe a small little sneak? Can we tell him? We can tell you, but then we'll have to kill you. Okay, I don't want to know. I'll just watch it instead. No, it's going to be very global, much more global. It's going to be in Belgium. It's going to be in Lebanon. It's going to be in Israel. It's going to be much more wide story. But the DNA of Fauda will stay, and I hope you're going to enjoy it. Really do. And I think that, you know, what we're looking for, and following this visit, of course, is to more collaborations with Indian filmmakers, with Indian TV show makers. And I think that what we understood from this visit is the potential, the huge potential of working together, just like the ambassador and the minister said and mentioned. We want to work together with India. Absolutely, and we would love that. Okay, now we talked about a sneak peek, but if I take you back into the past 3 seasons, which has been that one dialogue, that one scene that you have personally loved? If you had to just choose one. From the episode that was premiered yesterday, there's one scene that Leo Doron is talking to Captain Ayub Itzik Cohen. I think that this is one of the most strongest scenes that I've seen in Fauda. Thank you, Avi. He's complimenting you on stage. That's what makes a great partnership. And thank you guys so much for coming out here. Round of applause for him, ladies and gentlemen. We'll have your mics collected and at least some personal security after that threat on stage. But I'm okay with it. Fauda. Looking forward to it, guys. Ladies and gentlemen, अब ये दोनों महानुभाव जो कि इजरायली धारावाहिक फौदा से संबद्ध हैं, लियोराज और आवी इशराफ, वे दोनों अब मंच से प्रस्थान कर चुके हैं। एक बात है कि भारत में इजराइल के साथ न सिर्फ संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों को भी इजराइल के साथ एक प्रेम की भावना है, और शायद ये भी एक कारण रहा होगा इस धारावाहिक के भारत में अतिशय लोकप्रिय होने का। अब मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है गोवा के मुख्य सचिव को, साथ ही NFDC के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रविंद्र बाखर को। Thank you all so much for being on this very stage. And now it is time to call upon our technical partners to this very stage. May I please request, starting off with Mr. Ketan Mehta, Cube Cinema. Round of applause for him.
Mr. KJ Madhusudan, Cineonic. Mr. Abhinav, Pulse Electronics. Well, the host now calling in all the technical partners who made this such a big production possible today. And yes, they're being felicitated for the fine work that they're being done. Pulse Electronics, a Real Image, and there is a whole Barco, SMPTE. Plenty of technical partners who are being felicitated over here. आपने सही कहा जेफरी, क्योंकि कोई भी आयोजन होता है वो एक अकेला व्यक्ति या एक अकेला संगठन अपने आप में नहीं कर पाता है, और फिर ये फिल्मों से इतना बड़ा आयोजन जो है एक तरह का फिल्म कुंभ है ये इफ़ी, तो ये अपने आप में कोई एक संगठन नहीं कर सकता था। और हालांकि इसके पीछे पूरी तरह से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गोवा सरकार रहे, लेकिन साथ ही साथ कुछ अन्य साझेदार भी हैं, और उनके सहयोग के बिना जितनी सफलता इसने इस बार प्राप्त की है वो प्राप्त करना संभव नहीं होता। तो चाहे आपका योगदान कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, योगदान है तो उसे स्वीकारा जाना चाहिए, जो कि अभी किया जा रहा है। Tolerance and the intercultural dialogue. May I please invite Executive Director of ICFT UNESCO, Mr. Manoj Kadam, on stage, please. और इनके साथ मैं बुलाना चाहूंगा Mr. Sharman Joshi once again on stage to announce the winner. Sharman, please, we need you back on stage. All right, guys, let's have a look at the AV, please. Coming up on screen right now are excerpts of all the movies that qualify for the ICFT UNESCO Gandhi Medal winner. ICFT, जैसा कि पहले भी बताया था, कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फिल्म एंड टेलीविजन। Round of applause, ladies and gentlemen. What a great piece of work. Since the team is not present with us today, but उन्होंने message भेजा है, can we have a look at that, please? Hello, ladies and gentlemen. This is Payam Iskandari. I want to say a big thank you to jury member of International Film Festival of India. It's a big honor to achieve this award. And I want to say thanks to those people who believe in me to make this movie, especially my family, my lovely wife, Mr. Shahab Hosseini, and all the cast and crew of Legacy. And at the end, I genuinely believe that the people with the Down syndrome are the angel of God. And there are many, many beautiful stories about their life that should be heard. Thank you. A round of applause for them. Nargesi, the film जिसको direct किया है Mr. Payam Iskandari ने, featuring Hossein Iskandari, Sahab Hosseini and Ghazal Nazar. The film depicts struggles of a human with a Down syndrome whose greatest wish is to find love and get married. And in that pursuit, he attempts at doing anything. It seems, however, that the present-day world offers no place for him and his love until a gift completely turns his life around. Thank you so much, Mr. Manoj Kadam and Mr. Sharman Joshi, for being on stage to felicitate him. Though he's not here, thank you so much for being out here. दोस्तों, अब ऐसा है कि आगे की कमान मैं हमारी काबिल को होस्ट गीतिका को सौंपना चाहूंगा. Everybody, give it up for the very beautiful Gitika Ganjudhar. Thank you. जैसा कि अभी चर्चा की गई कि इफ़ी के जो 53वें अंक थे उसमें जो प्रदर्शन हुआ, तो सबसे पहली फिल्म जो प्रदर्शित की गई वो ऑस्ट्रियाई निर्माता डाइटर बर्नर की एल्मा एंड ऑस्कर वो थी, उसका प्रीमियर था. फिर मध्य फिल्मोत्सव में जो पिक्चर का प्रीमियर हुआ वो थी फिक्सेशन. ये
मनोवैज्ञानिक पक्षों को उघाड़ती फिल्म है और जिसके डायरेक्टर मर्सेडीज ब्राइस मॉर्गन है। और आज इसके समापन दिवस पर जो फिल्म अंतिम रूप से प्रदर्शित की गई, जिसका प्रीमियर हुआ, वो क्रिस्ट ज़नूसी जो पोलिश निर्माता हैं, उनकी बनाई फिल्म परफेक्ट नंबर रही, जिसमें भौतिकी और गणित के सिद्धांतों से जीवन दर्शन समझाने का प्रयास किया गया है। Winners of the international competition at the Geo-True 5G presents 53rd International Film Festival of India, Goa, streaming free only on Voot, Colors and Colors Cineplex. To begin, may I please invite the esteemed chairman of jury, Nadav Lapid, to join me on the stage and share his valuable thoughts with us at the 53rd IFFI closing ceremony. Please. So yes, it requires a very proficient team of jury to kind of come by up here. And coming up is Nadav Lapid, writer and film director from Israel. He is the jury chairperson who's going to be addressing the gathering right about now, looking calm and composed and taking control of the mic. Hi, wow, so many people, it's unbelievable. Okay, I'll try to be short. I'll say some things and then we'll give the awards. Well, usually I don't read from the paper, but this time I want to be more precise. So on behalf of my fellow jury, I would like first of all to thank from the bottom of my heart, of our hearts, the festival for this experience. We saw people working days and nights, around the clock, devoted, engaged. I would like to thank every person who assisted us, who took care of us, always with this sense of generosity. To thank drivers and hospitality team and translator and our fantastic secretary of jury. Thanks. We felt all over the cinephilia, the love of cinema, the curiosity, this vast public, people that films are essential for them, because as you all know, there's nothing more beautiful than a beautiful film. Even high-ranked politicians, the governor of Goa, for instance, who manifested interest in our work, it's not evident. I would like to thank the director of the festival and the head of the programming for the cinematic richness of the program, for its diversity, for the complexity. It was intense. We saw 7 films in the debuting competition, 15 films in the international competition, the front window of the festival. 14 out of them had their cinematic qualities and defaults and evoked vivid discussions. We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. I feel totally comfortable to share openly these feelings here with you on stage, since the spirit that we felt in the festival can surely accept also a critical discussion, which is essential for art and for life. Thanks a lot. Thank you. Thank you. तो ये थे नादाव लापिद, जो कि यहाँ इस 53वें इफ्फी के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष थे। ये निर्णायक मंडल सारे जो पुरस्कार हैं, गोल्डन पीकॉक, सिल्वर पीकॉक, उन फिल्मों का चयन करता है। तो उन सभी निर्णायक मंडल के जो प्रतिभागी सदस्य हैं, उनकी ओर से नादाव लापेद ने अभी संबोधित किया और उन्होंने ये भी बताया कि काफ़ी सारी जो फिल्में यहाँ पर प्रदर्शित की गई वो उनके दिल को छू गई। एक फिल्म जिसका नाम उन्होंने लिया द कश्मीर फाइल्स। तो अब जो पुरस्कारों की उद्घोषणा होने जा रही है, तो चलिए मंच की ओर चलते हैं। To make a good film is war. To make a very good film is a miracle. Easy, war or miracle? The oracle says, film पे कमान तो डायरेक्टर के हाथ में ही होती है. It's time to honor the force behind every film,
the director who gives life to a work of art, gives it a heartbeat, gives it a pulse. Ladies and gentlemen, presenting the award for the best director, IFFI. And to present this award, may I please request the Honorable Union Minister, Ministry of Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Government of India, Sri Anurag Singh Thakur, Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, Honorable State Minister, Ministry of Information and Broadcasting, Fisheries, Animal Husbandry, Dairying, Government of India, Dr. L. Murugan, to please join me on stage. So we've come to the business end of the closing ceremony where the awards now are going to be declared. We're starting off with the best debut feature film of a director. And dignitaries coming up, taking up on stage. And we will soon find out which, the 53rd IFFI Film Festival, who will be the best debut feature film director in just a while from now. Please join me on stage. And may I please invite Mr. Sudipto Sen and Mr. Pascal Chavans on stage to announce the winner of this category. So stand by. You're just going to listen to who's going to win the best debut feature film of a director. Sudipto Sen and Pascal Chavans walking their way up on stage, and very soon we'll find out with an envelope in hand to declare our winners for best debut feature film of a director. Debut feature film of a director. Hello, namaste. The award for Best Director, the winner is Nader Saivar, director of the film No End. A story. Άλλο που σου πω το σκέφτηκες. Μην είσαι μαλάκας, είναι πολλά τα λεφτά. Αν μπει το ΟΣΔΟΕ και ο εισαγγελέας εδώ μέσα, θα τα χάσετε όλα. Άκουσε με, Μαρία, πρέπει να του μιλήσεις. Ο Θεός ξέρει ότι είμαι μάνα. Είναι χρέος μου να προστατεύσω την οικογένειά μου. Θεέ μου, συγχώρα με. A story from Iran depicting the highly regressive social political system in a magical, subtle narrative, slow, yet hammering or sensitive. Nader Saivar is our anonymous choice as the best director. Congratulations. Please join us on stage. Nader, Aye. come. Nader, come. Aye, please, join us on stage. Round of applause, Best director. Is him. Applause. जब शुरुआत ऐसी है तो अंजाम कैसा होगा, बधाई हो इन्हें फिल्मी सफर की इस लाजवाब शुरुआत के लिए. Congratulations. I request the dignitaries to stay with us on stage. And Marushi, I have a question for you. This is, yes, all about debuting. How important is... I cannot very well English. Please write this. Thank you very much. Thank you very much to the jury. I would like to present this award to three of my friends. First, Zafar Panahi, who apart from cinema taught me honor and humanity. Second, in memory of Azra, from whom I learned friendship and honesty. And the third, Saeed, who's always been my companion and empathetic brother. Here you are. Well, this was the speech of the winner, which I read on his behalf. And Manushi, my question to you now. How important is a debut award
for an actor? Tell us. Good evening, everyone. I think questions never leave me. Well, of course, for someone who's just started out, 4 years ago, I'm not from the film industry. I was studying to be a doctor, and my life changed. And 4 years ago, when I signed my very first film, Samrat Prithviraj, it was like an adventure for me. I think I didn't know what to expect. I didn't know what I was getting into. I've learned, and I'm still learning. And whenever you get that validation, whenever you get a best debut, it only encourages you to do better. It humbles you, and of course, for me as an individual, it just makes me feel even happier that I made this decision 4 years ago. Sorry, I fumble when I'm nervous. You fumbled, but you're doing great, and your answer touched our hearts. Thank you for that answer. Ladies and gentlemen, I now request Udit Sen and Pascal Chauvans to give a special mention for the debut feature film of a director. Being the only Indian jury, I take the privilege to tell you 2 words in Hindi. हमने 22 फिल्म देखा पिछले 7 दिन में, और 22 फिल्म को देखना हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन एहसास था, और एक फिल्म के बारे में हम घंटों भर बात कर सकते हैं. इतने अच्छे सारे फिल्म की सिलेक्शन था. थैंक यू द प्री जूरीज, थैंक यू फॉर द चूजिंग द वंडरफुल फिल्म फॉर दिस फेस्टिवल. और हम लोग जब हम फिल्म बनाना शुरू करते हैं, हमें मालूम है किस तरह की मेहनत, किस तरह की सपने हमें लेके उतारना पड़ता है. तो it is my privilege to tell you few words of citation, which is officially I am supposed to say. An intense psychological dissertation of redundant morality, ingrained aversiveness towards the ethnic refugee crisis, and awakening adolescence consciousness culminates in Behind the Haystacks. I belongs to a refugee family. My parents got married on 14th of August 1947, and immediately after their marriage they were forced to cross the border and come to India. So I know the pain. Congratulations, Ashwini Aprodrew, the director of Behind the Haystacks. Can we take a look at the AV, please? ఏమున్నాదిరా యాడ్ సిక్కిందిరా ఏమరా ఇదే ఇట్లుందే పెట్టుకుందన్న గొట్టము ఇప్పుడు ఎందుకు బావ దీనికి బొమ్మలన్నీ చూస్తే నీకు బొమ్మల తర కనిపిస్తా ఉన్నాయా Congratulations. Talia ho jaye, ladies and gentlemen, for the winner. I think there is a problem in the chronology of the awards which were being selected. So the wrong film been shown, wrong teaser been shown. Let me tell you, this is the film which is called Cinema Bandi. It is the special mention category. And the director is Praveen Kandrelagu. And I am telling you, I have a citation. I think you have to come little later. So please wait for the official announcement. Our jury citation is All Heart Narrative of Cinematic Excellence of Cinema Bandi actually narrates the aspiration and passion of cinema in India. Vulnerability taken over by the tentativeness, yet when it is dream, cinema decides us, not the otherwise. Congratulations, Praveen. But you have to wait for some Praveen time. Can come and get his award. Achha, you can get. Of course. Please, aaiye, Praveen ji. Praveen Kandragula. Special mention award for the best debut feature film of a director. As we said when we began this category, the winner, Praveen Kandragula. Thank you, sir, for reading out the citation.
Many, many congratulations. Ladies and gentlemen, please applaud for these winners. Thank you, dignitaries. Please stay with me on the dais. Sudipto sir, please apni jagah le lein. Please do take your seat. Requesting the dignitaries to stay back with me on stage. We now move into the Best Director IFFI. It's time for the next award, the award for Best Director this evening. May I please request Shekhar Kapoorji and Mr. Rana Daggubati to join the dignitaries on stage and present this award. And Pascal, I'm going to request you to announce the winner. Best debut film of a director. Best debut film of a director. I tell Nader. No. Best debut film, sir. Here you are. Yes, sir. This one, best debut film. Yes, sir, Yeah, this one. yeah. Yes, sir. Award for the best debut feature film of a director, Asimina Proedrou, for the film Behind the Haystacks. Now, right now, perfect. And can we have Το άλλο που σου είπα το σκεφτικές. Μην είσαι μαλάκας, είναι πολλά τα λεφτά. Αν μπει το ΣΔΟΕ και ο εισαγγελέας εδώ μέσα, θα τα χάσετε όλα. Άκουσε με, Μαρία, πρέπει να του μιλήσεις. Ο Θεός ξέρει ότι είμαι μάνα. Είναι χρέος μου να προστατεύσω την οικογένειά μου. Θεέ μου, συγχώρα με. The film is an intensive psychological dissertation of redundant morality ingrained aversiveness toward the ethnic refugees crisis and awakening adolescent consciousness culminates in Behind the Haystacks. Many, many, many congratulations. A round of applause, ladies and gentlemen. And thank you to the winner for joining us on stage. Oh my God. Rana, please stay back with us on stage. Thank you, Anushri, for joining us on stage. Thank you very much. And congratulations to the winner. Ladies and gentlemen, a film director is like Columbus on a ship. He wants to discover land, and the team wants to go home. It's time to honor the force behind every film, the director who gives life to a work of art, gives it a heartbeat, gives it a pulse. Ladies and gentlemen, presenting the award for the Best Director, IFFI, may I please request Mr. Rana Daggubati to do the honors, joining the dignitaries on stage, and may I please request Mr. Pascal Schwans to announce the winner. Best Director. Yes, sir. Best Director. Best Director. Again. Nader Seibar for the film No End. Nader Saibar, congratulations! Can we please have the AV? Last time we missed late Sunday, we are doing the awesome work we have done, ladies and gentlemen. Put your hands together. Many, many, many congratulations. बहुत सारी तालियां हमें बजानी पड़ेंगी. I said film making is nothing short of a miracle. तालियों के साथ इनका हम लोग अभिनंदन करें, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Rana, and thank you, Mr. Pascal Schwans. आप सभी please अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, and requesting the dignitaries to stay with me on dais. Thank you, Rana. Thank you very much, sir. Thank you very much. So? Yes. The prize is actor and actress. That's later, sir. Yes. You can leave this with me, sir. Yes, thank you.
Thank you, and thank you, Rana. Thank you very much. Thank you for joining us on stage. और अब अगली category, ladies and gentlemen, the female actor in films has arrived. They've never had it better, and they're here to stay. दुनिया में लोगों ने दिल अपने हैं थामे हैं, आई है लेकर ये अब कितने हंगामे. It is time to hail the best actor female, जिन्होंने अपनी कुशल अदाकारी से जूरी मेंबर्स को प्रभावित किया. It is time to find out who's won the award for the best actor female IFFI. May I please request Asha Parekh ji and Shri Ramesh Sippy ji to join the dignitaries on stage and present the award. Aaiye ma'am, aaiye sir. And may I please invite Mr. Javier Angulo Barturan on stage to announce the winner of Best Actor Female. Good evening. Welcome once again on stage, ma'am. And Ramesh Sippy, sir, very, very warm welcome to you. Mr. Javier, can I please have you on stage to announce this next award? Aye. Please come, sir. Yes, female. Yes, sir. Hello. Namaste again. Award Best Actor, male. Female. The winner is? It's a female. No. No, it's a female. It's the Best Actor Female. Oh my God. Best Actor Female. Yes, sir. Is Daniela Marin Navarro, actress leader in I Have Electric Dreams. Yay! Danielle, can we have the winner, Amy, please? Nada me interesaba. Mis ojos. The prize. Después, una excusa encontré. Quise acompañarte. Yes, sir. The prize is received by Nicholas Ron, director of photography of the film I Have Electric Dreams. Many, many congratulations. Nicholas is receiving the award on behalf of the winner. And sir, please do read out the citation for us. For the ease, freshness and credibility with which the actress carries out her work, giving life to her character, full of naivety, so typical in the difficult age of adolescence. Felicidades, Daniela. Congratulations to her, and thank you for joining us on her behalf. Thank you, Asha ji. Thank you, Ramesh sir. Requesting you both to please take your seats. And the dignitaries, please stay with me on the dais. Yes, sir. Moving on. Ready for this? If you look for the synonyms of actor, ladies and gentlemen, the following words will come at you. Artist, entertainer, performer, barnstormer, headliner, impersonator, pantomimist, soubrette, thespian. अरे बाप रे, बड़ा भारी टाइटल है ये एक्टर का. This year, फटा कौन सा फिल्म का पोस्टर और निकला कौन सा हीरो? Let's find out. It's time to honor the actor who is walking away with the top honors tonight. It's the award for the best actor male IFFI. और इस अवार्ड को देने के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी आयुष्मान खुराना जी को to join our dignitaries on the stage. Ayushman, join us please. And sir, may I please request you to announce the winner of Best Actor Male. Oh, the Best Actor Award is for Baid
Movasheri, acting in the No End, the film, with a prize at Best Director. Yeah. The prize received by Nader Shariver, director of the film No End. Congratulations, Nader. Best actor male. Can we have the winner, Ravi, please? Kapış kulağına. Okuma niye? Ben ne inanmışım? Kim var idi orada? Ben ne yapayım şimdi baba? Kim var idi orada? Congratulations. Talia ho jaye Sardar, everyone. Yeah. Requesting the dignitaries to please stay with me on the Yeah. dais. And With- sir, thank you very much for joining us. With unanimity, we have chosen Bahir Movaseri as the best actor for amazing portrayal of Ayaz in No End film, directed by Nader Saibar in a protest drama, a common, honest citizen ostentatiously grew in mind of the spectator, helpless, conspicuous, vastly vulnerable, common Iranian, for the apparent facility of how this actor acts with economy of gestures, being capable to transmit with no words and only with a face the complexity of feelings that torment the protagonist of the film. Thank you. Thank you. Thank you for reading that out, and thank you for joining me here on stage. Thank you. Ladies and gentlemen, the next award is for someone who has won the hearts of the jury and has left no stone unturned in contributing to cinema in a decisive manner. The Special Jury Award is given to a film for any aspect of the film which the jury wishes to award or acknowledge, or an individual for his or her artistic contribution to a film. The award will be presented to the director of the film. It is time to announce the Special Jury Award at IFFI. May I please request Mr. Sudipto Sen on stage once again to announce the winner of this category. Welcome back, sir. Aye. Special Jury Award, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to honor the person जिनकी फिल्म देख के हम लोगों ने बड़े हुए हैं, हम लोगों ने फिल्म बनाना सीखा. द मैन लव दियर्स. लव दियर्स एक ऐसे फिल्म मेकर है जो हमारी बचपन से हमें इंस्पायर किए हैं एक विजुअल स्टोरी बोलने के लिए. हमें साइकोलॉजिकली एक स्टोरी को कैसे हमारी इंसानों की दिमाग में, दिल में, जहन में डाल दिया जाता है. Our official citation is congratulations to Love Diaz for his film When the Waves Are Gone for the Jury Award. The film exemplifies the power of visual storytelling where the words are the minimum yet emotion, especially the rage, and heightened to the fullest. It was sad that he was here till day before yesterday in IFFI, but he left. I think I request our jury chairman Nadav to receive the award on his behalf. Mr. Nadav Lalpeet, can you please join us on stage and receive the award on behalf of the winner, the Special Jury Award? Aye, please. And right there, sir. Congratulations. No, no. Stay with me, sir. Stay with me. Getting a special mention from this jury is not an ordinary task, ladies and gentlemen. We must put our hands together for the winner. And thank you for joining us. Okay, movies touch our hearts. We all know that. But they also awaken our vision. They change the way we see things. Director Martin Scorsese had once said, whilst films are predominantly created for entertainment purposes,
it would be a folly to reject their world-changing potential. Film, it turns out, is an ideal catalyst for change. इस साल वो कौन सी फिल्म है जिसने दुनिया को प्रभावित करने की ललकार छेड़ी? अब हमारे सबसे शानदार and the much coveted Golden Peacock Award को अनाउंस करने का पल आ पहुंचा है. Ladies and gentlemen, I'd like to first thank Ayushman for joining me on stage as we move towards this next award. And thank you, Sudipto sir, for joining us on stage. May I please request Chiranjeevi Garu and Khushbu Sundar, Steering Committee IFI, to please join our dignitaries on the dais. We are now presenting the award for the best film, ladies and gentlemen. The best film this evening. May I please request Mr. Nadav Lapid to please join me on stage and announce the winner of this big award. I can't bear the suspense. I watched many of these films at the festival. Each was better than the other. Tell us quickly who the winner of this biggie is. The best film, if yeah. As quick as possible. So, the biggest award of this festival, the award for the best film, goes to the film I Have Electric Dreams by Valentina Moel. Can we have the AV, please? A mí nada me interesaba, mis ojos buscaban solo ti. Después una excusa encontré y quise acompañarte. May I please request Nicholas Wong, the DOP of the film, to join us on stage and receive this award? Nicholas, please join us on stage. Ladies and gentlemen, बहुत सारी तालियां हो जाए. Come on everyone, this is the big award. Yeah! शानदार शानदार award. सबसे बड़ा award इस शाम का. Nicholas Wong receiving the honor on behalf of the winner of the best film. Congratulations. Yes, please, of course. Okay. So, this marvelous movie that you should all see is a movie that brings to the screen the present and the future of cinema. Violence and grace and fury and intimacy become synonyms. It was so electrifying, so vibrating, that while we were watching it, we felt as if ourselves were trembling. Go and see it if you have an opportunity. It's an unbelievable movie. Thank you, Nada, for those words. Thanks a lot. And congratulations once again to the winner. Thank you very much. I'd like to thank all their esteemed dignitaries for being so wonderful in honoring the awardees. You want to say a few words? Aye, please join us. Come. Just a few quick words from Valentina, Take your time. the director of Big this film, film. big winner. I quote, "I wrote this film without knowing where I was going. I did not think of the subject, the meaning, or the purpose. It ended up being a film about a father, about divorce, about the cruelty of desire and rage. Thank you for this award. It gives me the hope that cinema can be a place where we feel less alone, where we go without knowing where we are getting into. A place where we, spectators, filmmakers, characters, ordinary people, realize we have more in common than what we had previously thought. I am sad for not having been able to be there, but I am so grateful to the international jury, to the other films in our selection, and to the IFI Goa for the honor of having our film here. Thank you so much." Congratulations and well done. Thanking all their esteemed dignitaries for joining me on the dais. Honorable Chief Minister, sir, please stay with me. Honorable Chief Minister, sir, yes, sir. Please stay with me. Ladies and gentlemen, put your hands together for the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. He's a leader who has truly struck a chord with the people of Goa. He's the change maker who's
leading the people of Goa towards being a land of happiness. May I please request him for the closing speech. Sir, please, aye. So we've Thank heard you, it. sir. I have electric dreams taken in with the Golden Peacock as it slowly but surely come to the end. Our Honorable Chief Minister, Dr. Sawant. Present for the closing session of the 53rd edition of International Film Festival of India. Union Minister for Information and Broadcasting, Sri Anurag Singh Thakurji. Union Minister for the State Information and Broadcasting, Dr. L. Muruganji. Union Minister for the State for Tourism, Sri Sripadji Naik. The Member of Parliament. Our special guest for the from the film industry, Sri Chiranjeevi ji, Srimati Asha Parikh ji, Sri Akshay Kumar ji, Sri Ayushman Khurrana, Sri Rana Dangubat, Miss Manushi Chillar, Miss Isha Gupta. All the respected dignitaries from the film industry across the world who have gathered here, and all my dear friends. At the onset, I take this opportunity to congratulate all those filmmakers whose masterpieces have been part of this festival. My special mention is for the jury that has done the most difficult job to decide the prize winner. I also congratulate all those who have made it to the award, such the Best Debut Director, Best Director, Best Actor, Male and Female, the Special Jury Award, and the Best Film Award, respectively. The entire state of Goa is itself a film city with the natural set, the scenic beauty and hospitable people. The people of the state love art, culture, and music. Being a popular tourist destination, the state has attained the cosmopolitan outlook with the diversities in cuisine, language, and lifestyle. Every year, we at the Government of Goa try our best to make all the necessary arrangements connected with this film festival that will make you stay and experience in Goa a memorable one. Every year, it is our endeavor to add the more dimension into this festival that will enhance the engagement of the film fraternity, make the look and feel vibrant, enhance the public involvement, and create an audience pool that is aware about the facets of movies behind what we see on screen. In addition, being the most hospitable destination that we are, we have left no stone unturned to keep the bond between the Goa and IFFI delegates stronger. I'm very happy that we were able to curate the special movie screening, the section, along with the workshop in the film and entertainment for my Divyang brothers and sisters. It is really heartening that we have achieved a total registration and participation of the various segments more than 12,000. We in India have the culture and celebrate and nurture the 14 forms of knowledge, that is Vidya, and 64 forms of art, that is Kala. We are also the firm believers of the global philosophy of the universal brotherhood, that is Vasudhaiva Kutumbakam. This is fragile, the reason why the film fraternity from across the globe make it to the IFFI at Goa year after year. Carrying our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji's vision of making India's Vishwaguru, in my opinion, IFFI is a great ambassador for India. Modi ji's constant endeavor in serving the nation has earned him the special place in the heart and soul of every Indian, and the world has also started acknowledging his capacity, and India is the host of the G20 summit for this term. Under the visionary guidance from the Union government and support from my colleague
in the Goa government, I am able to carve the path of all-round growth of Goa. I call upon all the esteemed participants of this festival, right from the amateurs to the legend of this sector, to find some time and give us your valuable suggestions and feedback to improve the quality and connect of this festival further. We have amongst us Sri Chiranjeevi, and who has the unique privilege of being associated with the film industry as well as the political domain. I am sure that we will get insight and guidance from him and taking the IFFI to the next level on the global platform. Being the Chief Minister of Goa, I express my gratitude to all those who have contributed to making this event a grand success and making brand Goa synonymous with brand IFFI. We are also emerging as the most desired destination for MICE tourism. Immediately after IFFI 2022, we in Goa poised to host the World Ayurveda Congress, the congregation of Ayurveda practitioners, stakeholders from across the globe. The Purple Fest, the special event for the Divyang citizen from India. G20 Summit, this event will be held early next year, wherein the global leaders from the G20 nations will deliberate on the various issues of concern for humanity. I extend my invitation to all of you to witness the Grand World Ayurveda Congress being organized between 8th to 11th December 2022. म्हज्या समेस्त गोंयकारांक परत एकदा हांव इफ्फीची उर्मित परबी दिता आनी गोंय राज्यांतल्या समेस्त कलाकारांक आनी तंत्रज्ञांक लाभ मेळचो ह्या नदरेंतल्यान आमी विविध कार्यक्रम चालीक लायल्या. ते अशें आसले, गोंयच्या फिल्म निर्मात्या खातीर विशेष मास्टर क्लासचें आयोजन केल्लें. 6 शॉर्ट फिल्म आनी 1 लघुपट हाचो आस्पाव विशेष गोंय सेक्शन तयार केल्लें. इफ्फी यांच्या जोड पावलान फेस्टिवल मायल, हेरिटेज आनी एंटरटेनमेंट झोन इत्यादी निर्माण करपाक, तशेंच गोंयचे फिल्म निर्माते आनी तंत्रज्ञान कलाकार हांची उर्बा वाडोवपी कार्यावळीचें नियोजन केल्लें. हांव पुराय विश्वासान सांगता की गोंय सरकारान उपलब्ध करून दिल्लेल्या संदींचो तुमी सगळे जाण पुरेपूर फायदो घेतले इतकेच तुमकां सांगता. आनी फिर एक बार जो कलाकार यहाँ आए हैं, मैं उनका एक बार स्वागत करता हूँ. आप हर बार गोवा में आते हैं. लव गोवा, आते रहिए, शूट करते रहिए. वंस अगेन थैंक यू वन एंड ऑल. जय हिंद, जय भारत, जय गोवा. As Sir said, love Goa. Sir, the magic of hippie, it happens only in Goa. Thank you, sir, for concluding the 53rd IFFI Goa and its success in your words. Please, once again, let's give a round of applause for Dr. Pramod Sawant. Ladies and gentlemen, it's time for all of us to meet the driving force behind this successful festival. He is the reason that the 53rd IFFI Goa was Goliath, groundbreaking and grander than ever before. As the festival director of the International Film Festival of India, IFFI, his vision to make this festival as good as the best international film festivals across the globe came to fruition. His response has been overwhelming. Mr. Ravinder Bhakkar is the Managing Director, National Film Development Corporation, CEO of the Central Board of Film Certification, is also in charge of Films Division and Children Films Society of India. All film-related departments of the Ministry of Information and Broadcasting having come under a single command under the aegis of this visionary leader. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the very able and the very respected Shri Ravinder Bhakkar ji. Sir, please, I invite you on stage to render the vote of thanks. Namaskar, sir.
Good evening, everyone. Honorable Union Minister Shri Anurag Thakur ji, Honorable Minister of States, Honorable Chief Minister Goa, all the other distinguished guests. Today, after 8 days of extravaganza, this festival is coming to an closing. In fact, we had showcased more than 280 films from 78 countries, which clearly proves that if he believes in the spirit of Vasudev Kutumbakam, the world is one family. And this spirit was further strengthened by the accessible and the inclusive cinema for the Divyangjan, which we incorporated in this edition. The 75 Creative Mind, in which the 5 short films were made, and the award-winning film was from a woman protagonist and the woman director. In fact, I would be glad to share that more than 40% of the applications were from the women filmmakers in this festival, including in the competition section, more than 66% of the films were from the women filmmakers. In fact, I am proud to share that most important components of the festival were headed by our superwomen from NFDC. In fact, the ESG team was also headed by a woman officer. Not only that, the PIB and all the other sections were handled by the superwomen. So अगर हम 53वें संस्करण को नारी शक्ति को समर्पित करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. I am extremely thankful to our honorable minister who gave us a vision, who told us to make India not only a content hub but a content continent. Sir, we are working steadily towards that path, and I assure you in the coming years of come, this will not only be the Asia's but the world's biggest film festival. And I am thankful to the Honorable Chief Minister Goa, who provided all the infrastructure support to make this event a successful event. I am also thankful to all the jury, the steering committee members, my friends from the media, Ministry of Information and Broadcasting, Entertainment Society of Goa, also the team from PIB, Doordarshan, All India Radio, Photo Divisions, team from FTII, SRFTII. I am thankful to all who directly or indirectly contributed for the success of this festival. And at the end, I am thankful to the Goa, the people who turned up in a large number in the opening as well as in the closing ceremony. Thank you, Goa. I will look forward to see you in the 54th edition. I thank you all. Jai Hind. So there we go. It's curtains now on the 53rd International Film Festival, and what a wonderful evening it was. Well, to our technical team, they've done such a fine job. Dipshika, it was an honor to be with you, going live all over the globe and literally from a studio here at the Dr. Shyam Prasad Mukherjee Stadium. It was wonderful. Over to you, Dipshika. Thank you. Thank you so much, Jeffrey, and the pleasure was equally mine. दोस्तों, चमचमाती हुई ये शाम अब समापन को बढ़ रही है. 9 दिवसीय फिल्म महोत्सव का जो मेला यहाँ था, यहाँ गोवा में 20 नवंबर को आरंभ हुआ था, वो आज पूर्ण हुआ. लेकिन जो विचार है इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के आयोजन के पीछे, इफ़ी के आयोजन के पीछे, भारत को फिल्म कंटेंट निर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करने का, वो जारी रहेगा और अपना उद्देश्य प्राप्त करता रहेगा, सिने प्रेमियों को लाभान्वित करता रहेगा. आकाशवाणी की टीम पिछले 9 दिनों से प्रत्यक्ष रूप से इफ़ी से जुड़ी रही, हर दिन आप तक समय समय पर अपडेट्स लाती रही, और आज शाम का आयोजन भी आपके रेडियो सेट्स तक लाने वाले दल के सदस्यों को मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगी. अभियांत्रिकी दल की ओर से थे श्री दत्ता कामत, प्रकाश अकोलकर, प्रमोद कुमार, पीवी रविंद्रन, राजेंद्र नायक, सुहास्यचारी और गुरुदास गावस. इस प्रोडक्शन दल का दारोमदार संभालने वाले प्रोड्यूसर थे दामोदर आठलेकर, और अंग्रेजी भाषा में आंखों देखा हाल मेरे साथ आप तक पहुंचाने वाले मेरे सहयोगी थे जेफरी मैनुअल. तो और इन सब के साथ मैं दीपशिखा दुर्गापाल आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑडिटोरियम से वापस आकाशवाणी के स्टूडियो लिए चलती हूँ.
अभी आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया, खांसी होगी, और या ये फिर वैसी जैसे ये मुंह का खुरपका रोग है, गलघोटू की शिकायत है आदि, इनकी रोकथाम प्रॉपरली होनी चाहिए। इसके बारे में हमारे पशुपालक को सजग रहना चाहिए, और यदि इन बातों का वो ध्यान रखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उनका पशु न बीमार होगा, बल्कि दूध उत्पादन क्षमता में बढ़ता ही रहेगा और उसे उसकी of India from Dr. Shyama Prasad Mukherjee Indoor Stadium, Panaji, Goa. Our commentators were Deepshikha Durgapal in Hindi and Jeff Emanuel in English. Organized by All India Radio Goa, this broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे भाई सुन रहे थे ये